अच्छा जी, gives me great pleasure to teach you Georg Wilhelm Friedrich Hegel, who lived from 1770 to 1831. और जैसे कि आप ऑलरेडी कह चुके हैं कि जो भी बंदा हेगल पढ़ाने की कोशिश करता है वो सबसे पहले ये इसी बात से शुरू करता है कि जी इसको पढ़ाना बड़ा मुश्किल है और पढ़ाना बड़ा नामुमकिन है। इसकी वजह यह है कि उसने इतना कुछ लिखा और इतनी मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पे लिखा और कोशिश की कि उन सारे मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को एक टोटलाइजिंग थियरी के अंदर वो परो दे। And that's not an easy task. So in that sense, Hegel really was, you could say, an encyclopedic mind of his own generation. और उसके अलावा जब वो इन मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात कर रहा है, नेचर पे बात कर रहा है, फिलोसफी पे बात कर रहा है, हिस्ट्री पे, पॉलिटिक्स पे, लॉ पे, फिनोमिनोलॉजी ऑफ द माइंड एंड सो ऑन, इन सब चीज़ों पे बात कर रहा है, तो कई जगह वो टेंजेंट्स लेता है और डाइवर्जेंसेस लेता है जो बजाते खुद इतनी इंटरेस्टिंग है कि वो कभी कभार किताब से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग उसके टेंजेंट्स और वो चीजें बन जाती है। तो इन सब चीजों को इंटीग्रेट करना और वो भी फिर घंटे, सवा घंटे, 2 घंटे के लेक्चर के अंदर उस सारी चीज को समेटना कोई आसान काम नहीं है, मगर दैट्स व्हाट वी गोइंग टू ट्राई एंड डू। सबसे पहले तो आप देखें जी उसकी जो किताबें हैं, फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड 1807 व्हिच इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स रिटन। उसके बाद साइंस ऑफ लॉजिक 3 वॉल्यूम्स के अंदर, जिसमें लॉजिक, मेटाफिजिक्स, कोर ऑफ फिलोसफी वगैरह डिस्कस हुआ है। उसके बाद इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसॉफिकल साइंसेस 1816 के अंदर, और एलिमेंट्स ऑफ द फिलोसफी ऑफ राइट जो उसकी पॉलिटिकल फिलोसफी की किताब है। तो ये किताब नहीं है, 4 किताबें नहीं है, ये किताबें हैं, कई वॉल्यूम्स हैं। और फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड जो है वो सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ इंटरेस्टिंग है। और हेगल के साथ आप ये देखेंगे, चाहे पॉलिटिकल फिलोसफी डिस्कस हो रही, फिलोसफी डिस्कस हो रही हो, कि सडनली इनफैक्ट सारे जर्मन इस पीरियड के फिलोसफर्स के साथ आप ये देखेंगे, थिंकर्स के साथ, कि सडनली फिलोसफी टेक्स अ बिग जंप फॉरवर्ड। मतलब प्री हेगेलियन फिलोसफी, प्री कांटियन फिलोसफी जब आप पढ़ेंगे इतनी मुश्किल नहीं आपको लगेगी, कंसेप्चुअली मुश्किल नहीं लगेगी, लिंग्विस्टिकली भी ठीक है, थोड़ी सी आउट ऑफ डेट लैंग्वेज जरूर होगी, मगर मोर और लेस यू कैन मेक सेंस ऑफ इट। हेगल और हेगल के बाद से फिलोसफी बिकम्स वेरी वेरी difficult to read, language becomes more difficult to understand, और जब तक कि आप उसमें as a professional philosopher आप नहीं बैठते और उसको समझते, तो आप यानी किसी प्रोफेशनल से, किसी टीचर से नहीं पढ़ते, तो खुद से पढ़ के समझना काफी औखा काम है। ये नहीं कि इम्पॉसिबल है, मगर मुश्किल काम है। So philosophy now moves out of the domain in a certain sense also of the amateur philosopher and comes into the university। और अब हम देखते हैं कि कांट हो या हेगल हो, it really situates itself inside the university and it develops a degree of sophistication that it didn't really have before। और उसके बाद आप देखेंगे आगे there's no looking back from Hegel। So अगर मैं हेगल को सम अप करने की कोशिश करूं कि किधर से शुरू, कहां से करना है, इसको पकड़ना कहां से, इसका सिरा पकड़ना कहां से, क्योंकि अगर आप कंक्लूजन से शुरू करेंगे आप कंफ्यूज होंगे। सबसे पहले समझने की जरूरत है कि हेगल करने की क्या कोशिश कर रहा है। भाई हेगल इज इंटरेस्टेड इन चेंज। ये वो इमरान खान वाली तब्दीली नहीं है, ये तब्दीली जो है वो हर चीज की तब्दीली, ऑल काइंड्स ऑफ चेंज, एवरी काइंड ऑफ चेंज दैट यू कैन थिंक ऑफ, चेंज इन टर्म्स ऑफ योरसेल्फ, चेंज इन टर्म्स ऑफ थॉट, चेंज इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री, change in terms of nature, any kind of change you can think of, general laws of change, उसके बारे में वो सोचना चाहता है। अब ये बड़ी औखी किस्म की बात है। किसी ने कभी, जब भी आप चेंज के बारे में सोचते हैं तो आप सोचते हैं कि किसी चीज को आप चेंज कर रहे हैं, उसके बारे में आप सोच रहे हैं ना। मिसाल तौर पे सोसाइटी को चेंज कर रहे हैं, पॉलिटिक्स के बारे में सोच रहे हैं, सो ऑन। बट हेगल इज नॉट थिंकिंग ऑफ दैट, ही वांट्स टू क्रिएट जनरल लॉज ऑफ चेंज। हाउ डू वी अंडरस्टैंड चेंज? इसका मतलब ये है, पहले तो वो समझना चाह रहा है कि चेंज होता कैसे, कोई भी चेंज, किसी किस्म का भी। दूसरा वो समझना चाह रहा है कि आइडियाज चेंज होते हैं, फिलोसफीज चेंज होती हैं, हमारे ख्यालात, तसव्वुरात तब्दील होते हैं, तो वो कैसे तब्दील होते हैं, ये प्रोसेस कैसा होता है। कुदरत के अंदर हमें तब्दीलियां नजर आती हैं, चीजें पैदा होती हैं, मर जाती हैं, मिट जाती हैं, स्पीशीज पैदा होती हैं, खत्म हो जाती हैं, पता नहीं कितनी स्पीशीज इस तारीख के अंदर, नेचुरल हिस्ट्री के अंदर मेरे ख्याल है 97% स्पीशीज या समथिंग लाइक दैट जो है वो तो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो देयर वर सो मेनी स्पीशीज इन हिस्ट्री, वो बहुत सारी, ज्यादातर एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। जिस तरह डायनासोर्स की कितनी सारी मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ इकसाम थी, वो सारी जो है वो खत्म हो गई हैं। सो हाउ डज नेचर चेंज, एंड देन ऑफ कोर्स हाउ डज हिस्ट्री चेंज। हमें जाहिर बात है इंसानों में भी दिलचस्पी है, क्या हम कोई एक ही कानून बना सकते हैं जो हिस्ट्री पे भी एप्लीकेबल हो, नेचर पे भी एप्लीकेबल हो, फिलोसफी पे भी एप्लीकेबल हो, हर चीज पे एप्लीकेबल हो? ये तो बड़ी अजीब सी बात लगती है। द यूनिवर्सल लॉज ऑफ चेंज, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हेगल। हेगल को अगर सम अप करना है आपने, तो उसका जो मेन काम है वो ये है कि ही वांट्स टू अंडरस्टैंड चेंज, हाउ डज इट हैपन।
So what if the laws of change were the same, whether we talk about logic, or we talk about nature, or we talk about history, philosophy? That is the central question of Hegel. और उसका वो जवाब भी देता है, और जवाब वो देता है कि डायलेक्टिक्स आर द यूनिवर्सल लॉज ऑफ चेंज. तो ये जो लफ्ज है ना डायलेक्टिक्स, अब डायलेक्टिक्स को वो डेवलप करेगा और कहेगा कि इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड चेंज, एनी काइंड ऑफ चेंज, चेंज इन योर ओन सेल्फ, चेंज इन योर ओन पर्सनैलिटी, जो भी चेंज है उसको अगर आपने समझना है तो किस चीज को आपने समझना है? डायलेक्टिक्स को. अब आपको याद होगा डायलेक्टिक्स क्या है थोड़ा बहुत, क्योंकि आपने सुकरात और अफलातून और अरस्तु मेरे साथ पढ़ा, ग्रीक फिलॉसफी मेरे साथ पढ़ी, और ग्रीक फिलॉसफी के अंदर आपको पता है कि डायलेक्टिक्स, खास तौर पे सोक्रेटिस इज नोन फॉर डायलेक्टिक्स. वो डायलेक्टिक्स क्या थे? वो ये थे कि किसी अरे बेचारे को पकड़ लेते थे, क्या नाम था आपका? सजाद को पकड़ लेता था सोक्रेटिस जाके और कहता था सजाद बताओ तुम क्या कर रहे हो, और सजाद कहता था कुछ नहीं यार मैं ये कुछ लिख रहा हूँ करेज पे, और वो कहता था अच्छा करेज, मुझे तो नहीं पता करेज क्या होती, तुम बताओ करेज क्या होती. लो जी करेज पे फिर लंबी कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती. और सोक्रेटिस का काम ये होता था कि वो सबको, असल में बड़ा अक्लमंद आदमी था, मगर सबको आके वो कहता था मैंने तो कुछ पता नहीं, तुसी मैंने दसो, और फिर आप बताते रहते थे, वो सवाल करता रहता, सवाल करता रहता, सवाल करता रहता. तो इस तरह करके नॉलेज जो है वो डायलॉग के जरिए, जिसको डायलेक्टिक्स भी कह सकते हैं, डायलॉग के जरिए आगे बढ़ती थी. अब डायलॉग के अंदर तीन मुख्तलिफ पहलू हैं. पहला पहलू तो ये है कि कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट देगा कि करेज मेरा ख्याल है टेम्परेंस है, या करेज जो है वो टेनेसिटी है. फिर आगे से सोक्रेटिस जो है वो काउंटर आर्ग्यूमेंट देगा, वो कहेगा अच्छा अगर करेज जो है टेम्परेंस और टेनेसिटी है, तो अगर कोई बेवकूफ आदमी किसी गलत चीज के ऊपर टेनेशियसली खड़ा हो जाए तो क्या उसको आप करेज कहेंगे? तो दूसरा बंदा कहेगा नहीं ये तो करेज नहीं होगी. तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर देगी. काउंटर आर्ग्यूमेंट वो ऐसा को देगा जिससे कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो जाएगी, और जो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होगी उससे फिर जो ओरिजिनल डेफिनेशन है करेज की उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, उसको रिजॉल्व किया जाएगा, एक नया सिंथेसिस पैदा किया जाएगा. तो इस तरह जो है एक आर्ग्यूमेंट है, उसके ऑपोजिट एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है, जिस तरह हम अक्सर करते हैं कि भाई दिस हाउस प्रपोजेस फलाना एंड यू नो द ऑपोजिशन प्रपोजेस फलाना, जिस तरह हम डिबेट करते हैं. तो डिबेट जब होगी, दो चीजों का टकराव होगा, तो आपके जो गलत ख्यालात हैं वो उड़ जाएंगे, जो उनके गलत ख्यालात हैं वो उड़ जाएंगे, और बीच में से कोई नया सिंथेसिस निकलेगा ऑफ द करेक्ट आइडियाज. तो इस तरह सोक्रेटिस ने का एक मेथड दिया हमें कि हम चीजों को समझ सकते हैं. मुझे ये बड़ा पसंद है, द यिन एंड द यांग. यहाँ पे एक व्हाइट ड्रैगन है इन ब्लैक, और वहां पे एक ब्लैक ड्रैगन है इन व्हाइट, और वो एक दूसरे से लड़े और एक दूसरे से घूम रहे हैं, और घूमते हुए आगे कहीं जा रहे हैं. दैट इज अ ग्रेट मेटाफर फॉर डायलेक्टिक्स. द यिन एंड यांग एक्चुअली इन माय व्यू इज प्योर डायलेक्टिक्स. अच्छा, अब हेगल जो है ना उस आइडिया को, इस डायलेक्टिकल आइडिया को, कि जिसको फिचे अपनी जबान में कहता है कि एक थीसिस है, एक एंटीथीसिस है, उसमें सिंथेसिस निकलता है, इसी आइडिया को लेके जाता है. और हेगल के लिए 3 इज द मैजिक नंबर. आप देखें जो भी चीज वो एनालाइज करता है ना, उसको 3 हिस्सों में उसने डिवाइड करना, उसको शौक है. डायलेक्टिक्स है ना, एक तरफ एक तरफ थीसिस है, एंटीथीसिस है, और सिंथेसिस उसने निकालना ही निकालना है. तो क्या कहता है? कहता है जी सबसे पहले तो मैं दुनिया की जो सारी अंदर तब्दीलियां हो रही हैं जिनको मैंने स्टडी करना है, उनको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ. ठीक है, 3 हिस्सों में डायलेक्टिकली उनको डिवाइड करूंगा. एक है द थिंग इन इटसेल्फ, ये मेरा थीसिस है. इसको मैं कहता हूं लॉजिक. लॉजिक जो है इज द थिंग इन इटसेल्फ, क्योंकि वो किसी एक्सटर्नल चीज को उसने नहीं देखना इन ऑर्डर फॉर इट टू डेवलप इट्स ओन फर्स्ट प्रिंसिपल्स. दूसरा है आउट ऑफ इटसेल्फ, दिस इज द एंटीथीसिस. ये है नेचर और लाइफ, जो चीज हमें कायनात में चीजें नजर आती. ठीक है, दूसरी ये चीज है जिसको हम पढ़ेंगे. इन एंड फॉर इटसेल्फ, उसका सिंथेसिस फिलॉसफी एंड माइंड, के जो नेचर की स्टडी है और साथ उसके ये चीजें शामिल हैं. फिलहाल आप इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना होने की जरूरत नहीं है, बस आप ये समझेंगे 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है. एक लॉजिक को पहले पढ़ेगा, फिर नेचर और लाइफ को पढ़ेगा, और आखिर में फिलॉसफी को पढ़ेगा. इन तीनों चीजों को एक्सप्लेन करेगा कि इन तीनों लेवल्स पे, 3 डिफरेंट लेवल्स आ गए ना, इन तीनों डिफरेंट लेवल्स पे चेंज किस तरह से होता है. यानी कि सबसे पहले लॉजिक में चेंज कैसे होता है, लॉजिक में चेंज हो सकता है? कहता हाँ मैं दिखाऊंगा. नेचर में चेंज कैसे होता है, और आखिर में ये कि फिलॉसफी या हिस्ट्री में तब्दीली कैसे आती है. इन तीनों लेवल्स पे वो कवर करेगा. अब मैंने आपको काम आसान करने के लिए कलर कोड कर दिया थोड़ा सा. लॉजिक का अपना कलर होगा, नेचर का अपना कलर होगा, और फिर हिस्ट्री का अपना कलर होगा, ताकि आपके जहन में चीजें क्लियर रहें. तो अभी हम लॉजिक पे बात करते हैं. अब लॉजिक में आपको याद होगा कि ग्रीक्स ने ऑब्वियसली लॉजिक की बुनियाद रखी. तो अफलातून जो है वो ये कहते थे कि एसेंसेस आर स्टेबल, मैटर इज इन मोशन और मूवमेंट. आपको याद होगा कि जिस तरह पाइथागोरस का थ्योरम है
एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए सच होता है। मगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल आप इस दुनिया में अगर लकड़ी से बनाने की कोशिश करें, मेटल से बनाने की कोशिश करें, पेंसिल से बनाने की कोशिश करें, तो कभी भी एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन भी नहीं बन सकती आपसे, कभी भी एग्जैक्ट ट्राइंगल नहीं बन सकता, कभी भी उसके एंगल एग्जैक्टली बराबर नहीं होंगे, वगैरह वगैरह। ऑल एक्चुअल ट्राइंगल्स आर नॉट एज absolutely clear as the abstraction of a triangle. So in that way, Plato thought कि essences जो है, किसी चीज की essence, एक टेबल की essence, उसका तस्वर जो है वो कहीं पर है और वो abstract में है। टेबल का तस्वर abstract में, और हर actual टेबल जो है वो टूट भी जाती है, ठीक भी हो जाती है, खराब भी हो जाती है, वगैरह वगैरह, वो उसकी मटेरियल मैनिफेस्टेशन है। सो नॉलेज उसके पॉइंट ऑफ व्यू में वो चीज थी जो कि इटर्नल एसेंस की चीज हो। मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कभी चेंज नहीं हो सकता, जो मर्जी कर लो उसने वैसे का वैसा रहना है। 2 + 2 विल ऑलवेज बी 4, कभी ये चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। इट्स ट्रू बाय डेफिनेशन। नॉलेज मस्ट बी लाइक दैट, इट मस्ट बी लाइक मैथमेटिकल, जिस तरह मैथमेटिक्स है, लॉजिक मस्ट बी लाइक दैट काइंड ऑफ लेवल ऑफ सर्टेनिटी, डिडक्टिव लाइक दैट, एक्सेट्रा। सो और डायलेक्टिक उसके लिए यही था, एज अ मेथड जिससे आप इन एसेंसेस को समझ सकते हैं। आपने टेबल को नहीं समझना, टेबल की जो एसेंस है उसको समझना है और उसको रिलेट करना है चेयर की एसेंस से। ये सारा हम पहले भी कोर्स में पढ़ चुके हैं। एरिस्टोटल ने उसको उलट कर दिया, उसने कहा द एसेंस ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट इज विद इन द फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसी के अंदर उसकी एसेंस है। नॉलेज इज द करेक्ट कैटेगराइजेशन ऑफ दीज एसेंसेस दैट आर पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टेबल। किसी एब्स्ट्रैक्ट रेल्म में नहीं है उसकी एसेंस इसी चीज के अंदर है और वो ही आपको नजर भी आ रही है एंड सो ऑन। तो उसने उसको उल्टा दिया। एरिस्टोटल ने कुछ लॉज ऑफ लॉजिक दिए, इनका रटा मारने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फिलोसफी की क्लास नहीं है, मगर मैं जल्दी से बताता हूँ। पहला उसका नाम था पहला उसके लॉ का नाम था द लॉ ऑफ आइडेंटिटी, विच इज बेसिकली ए इज इक्वल टू ए। इसको हम टोटोलॉजी भी कहते हैं। आप कह सकते हैं तैमूर इज तैमूर। If Taimur is Taimur, then the next law comes from that very law, which is law of non-contradiction. Contrary propositions cannot both be true. If Taimur is Taimur, then Taimur cannot be not Taimur. Do you get it? Okay, one of the two must be true. Either Taimur is Taimur or Taimur is not Taimur. Both two things cannot be true. And तीसरा उसने law निकाला, law of excluded middle. For any proposition, either that proposition true or its negation is true. ये 3 लॉज ऑफ लॉजिक हैं एरिस्टोटल के। मगर इसमें जो लॉजिक की जो शक्ल बनाई एरिस्टोटल ने, आप देख सकते हैं ये उसने सोक्रेटिस से ही निकाले 3 लॉज और प्लेटो से, सोक्रेटिस से ही अखज किए। अब ये उसने कहा कि दीज आर लाइक मैथमेटिकल लॉज, दे कैन नॉट चेंज। ये ऐसी चीजें हैं जो कि डिडक्टिवली ट्रू हैं एंड फॉरएवर ट्रू एंड सो ऑन। अब हेगल बादशाह जब इस बात पे शुरू करते हैं, वो कहते हैं इन लॉजिक वन इज डीलिंग विद कॉन्सेप्ट्स रॉब्ड ऑफ देयर एम्पिरिकल कंटेंट। इससे मतलब ये है कि मैं अगर लॉजिक की लेवल पे बात कर रहा हूं तो मैं किसी कॉन्क्रीट टेबल की बात नहीं कर रहा, मैं टेबल इन दी एब्स्ट्रैक्ट की बात कर रहा। अगर मैं करेज की बात कर रहा हूं तो किसी फर्द की करेज की बात नहीं कर रहा, करेज एज अ क्वालिटी की बात कर रहा हूं। उसको एब्स्ट्रैक्ट कर रहा हूं फ्रॉम द कॉन्क्रीट वे इन विच इट एग्जिस्ट्स इन द वर्ल्ड। एब्स्ट्रैक्शन में बात कर रहा हूं, उसी को हम कहते हैं मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स से मुराद यही है कि वो एब्स्ट्रैक्शन है, फर्स्ट प्रिंसिपल है वो। वी आर नॉट लुकिंग एट कॉन्क्रीट थिंग्स, वी आर लुकिंग एट द प्रिंसिपल्स, द फर्स्ट प्रिंसिपल्स दैट अंडरलाई everything that's concrete. The only thing that can be said about something without any empirical content whatsoever is that it exists. अगर मैं उसमें से सारी concrete चीजें निकाल दूं तो आखिरी कैटेगरी क्या बच जाएगी? अगर आप हैं, ठीक है, आपका नाम क्या है? सॉरी, माइनस हो गया, अब आपका नाम अरम नहीं है। अच्छा, आप लड़का हैं लड़की हैं? माइनस हो गया, अब आप लड़की भी नहीं है, हमने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया इसमें से। अच्छा, आप यंग हैं या बुढ़ी हैं? माइनस हो गया, अब आप ना यंग है ना बुढ़ी है, ठीक है। अच्छा, आप ह्यूमन बीइंग है या एनिमल है? वो भी माइनस कर दिया, अभी हम कहते हैं आप सिर्फ लिविंग थिंग है। आप देखिए ना, हम एब्स्ट्रैक्शन 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 पे जा रहे हैं। जो व्हाट मेक्स अरम अरम, उसको हम निकाल रहे हैं और हम उसकी लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे जा रहे हैं। आखिर में जब हम जाएंगे तो कहां पे हम पहुंचेंगे? जब हम सब कुछ कॉन्क्रीट अबाउट अरम खींच लेंगे तो कहां पे हम बचेंगे कि कुछ है, समथिंग एग्जिस्ट, यू एग्जिस्ट, देयर इज बीइंग, देयर इज समथिंग दैट एग्जिस्ट। उससे अगर आगे हम जाएंगे कि वो भी खत्म कर देंगे तो फिर तो कोई चीज ही नहीं बची ना जिसके बारे में बात कर सकते हैं। सो एट द वेरी फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग वी कैन से देयर इज बीइंग, इट हैज बीइंग। सो इफ वी कैन प्रूव नाउ समहाउ दैट बीइंग इवन इज नॉट अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, तो फिर बाकी सारे कॉन्सेप्ट तो स्टैटिक नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर बीइंग ही स्टैटिक नहीं है तो और किसी चीज ने स्टैटिक नहीं रहना।
और वो यही साबित करता है, कहता है इवन बीइंग इज नॉट अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, द डायलेक्टिकल ऑपोजिट ऑफ बीइंग इज नथिंग। एक तरफ अगर कुछ चीज है जो एग्जिस्ट करती है, दूसरी तरफ वो चीज है जो कि उसके ऑपोजिट है। वो ऑपोजिट क्या है? नथिंगनेस। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ नथिंगनेस। वो कहता है कंसेप्चुअली बीइंग कैन ओनली एग्जिस्ट इन ऑपोजिशन टू नॉन बीइंग। If everything was being, then there would be no such thing as being. Or if everything was non-being, there would be no such. Everything must exist in its opposition, he says. मिसाल के तौर पे, if we were all, if there was no such thing as women in the world, then, or in any of the animal kingdom, then there would simultaneously also be no such thing as a male. Because the concept of a male requires the existence of the concept of a female, against which the concept of the male is counterposed. Male is what is not female, female is what is not male. Correct? Just like अगर हम ऐसे प्लेनेट में रहते जहां पे दिन रात ना होते, सिर्फ दिन होते, तो हमें जहां रात का कॉन्सेप्ट ना होता, वहां दिन का कॉन्सेप्ट भी ना होता, क्योंकि दिन का कॉन्सेप्ट ही रात के कॉन्सेप्ट से निगेशन में निकलता है, डायलेक्टिकल ऑपोजिट में निकलता है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि अगर मौत ना होती, अगर हम सारे जो हैं किसी गॉड की तरह हमेशा जिंदा रहते और हम मरते ना, तो लाइफ का कॉन्सेप्ट भी ना होता। कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ एग्जिस्ट बिकॉज कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ एग्जिस्ट। कैसी मजेदार किस्म की बात है। जब हम कहते हैं ना किसी कॉन्सेप्ट को डिफाइन करो, तो डिफाइन करने से हमारी मुराद ही होती है कि उसकी लिमिट्स बताओ। जिस तरह हम कहते हैं ना ये डिफाइन कर रहा हूं मैं, उससे बाहर इसका मतलब है क्या चीज है, उसका ऑपोजिट है। सो एवरीथिंग इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इट्स ऑपोजिट। ये बहुत क्लियर थिंकिंग भी है और अच्छी चीज भी है कि अगर आपको वो कहता है ना डिफाइन करो किसी चीज को, तो आपने हमेशा डिफाइन करना है इन ऑपोजिशन टू the opposite of that particular thing. The opposite of color is colorless. The opposite of black is white, etc. Things are defined always by in opposition to what they are not. So being का opposite क्या है? Nothingness. So अब चक्कर ये है कि one cannot call to mind one category without invoking the other. Nothing, as I've said to you, is the antithesis of being. अब consciousness experiences this unity of opposites as contradiction. Why? Because being constantly is transforming into something that it is not. We see motion हो रहा है, ठीक है, you're a young woman, soon you will be not such a young woman, then you will be an old woman, and then you won't even exist as a woman, you won't exist at all. So being is constantly transforming into non-being. In fact, कोई भी चीज जब चेंज हो रही होती है, कोई पत्थर भी पड़ा हो, ये तो लिविंग थिंग की मैं बात कर रहा हूँ, कोई पत्थर भी पड़ा हो तो पत्थर टूट जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा। So the way the Greeks defined change was that they said change means that the being becomes something that it is not. It transforms into something that it was not. So you were a child, you transformed into an adult. You were not an adult when you were a child, and you became an adult. Now you're no longer a child. So you're transforming into something that you are not. Any transformation is the transformation for being into, in a certain sense, non-being. Now this seems to be a contradiction. This contradiction is only resolved by invoking a third category called becoming. ये जो process है of the turning of being into non-being, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसको हम समझ सकते हैं dialectically by the process of becoming. Becoming is the process whereby being turns into non-being, which is a new kind of being, and that turns into its opposite, and its opposite, its opposite, and so on. So becoming is the process of turning into something which it is not, that is not being. I know this is very abstract, this is metaphysics, this is how philosophy at this level works, but just go with it for now. Hence, even logical concepts as fundamental as being are unstable and evolving dialectically. Being turns into non-being, and this whole process of being turning into non-being, which is another being, which turns into non-being, and so on, this whole process is called what? Becoming. So in this way, at the very fundamental and core level of logic itself, even the concept devoid of all concretely existing qualities, even the most abstract thing you can say about something, its being, is also unstable and in motion. It is in the process of becoming. Being is in the process of becoming. That means everything is changing. So ideas and the thing in itself, how do we understand reality? अभी हम politics पे भी आएंगे. I know बहुत abstract बातें हैं, मगर just bear with me. अब जब हेगल अपने जमाने में लिख रहा था, तो फिलोसफी दो हिस्सों में टूटी हुई थी। एक तरफ से रैशनलिस्ट, दूसरी तरफ से एम्पेरिसिस्ट। ये देख लें, ये जी है रैशनलिस्ट, इसमें लॉक है, इसमें बार्कले है, इसमें ह्यूम है, और ये एम्पेरिसिस्ट, इसमें डेकार्ट है, स्पिनोजा है, लाइबनिज। ठीक है, तो रैशनलिस्ट जो इस साइड पे बैठे थे, जो ज्यादातर यूरोपियन कॉन्टिनेंट पे थे, वो कहते थे नॉलेज और आइडियाज द माइंड अराइव्स एट डिडक्टिवली एंड ऑन इट्स ओन। दे आर लाइक प्लेटो टाइप पीपल
ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एम्पेरिसिस्ट कहते थे नॉलेज कम्स फ्रॉम परसेप्शन ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स थ्रू सेंसेस। जब हम चीजों को फील करते हैं, टच करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो हमें सेंसरी परसेप्शन मिलती है, उससे हम अपने आइडियाज बनाते हैं। अब ये जो लड़ाई थी, इसमें जो रैशनलिस्ट थे वो कहते थे रीजन एंड इंट्यूशन आर मोर इंपॉर्टेंट देन सेंसेशन एंड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंसेस हमें मिसलीड करते हैं। मिसाल तौर पे चप्पू आप पानी में डालते हैं, आपको लगता है चप्पू यूं टेढ़ा हुआ है, मगर जब आप बाहर निकालते हैं आपको पता चलता है चप्पू टेढ़ा नहीं है। तो आपकी सेंसेस आपको कॉन्स्टेंटली मिसलीड कर रहे हैं, जो रैशनलिस्ट है वो कहते थे। रिगार्डिंग ऑल और मोस्ट आइडियाज एज इनेट रादर देन कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, यानी हमारे जहन के अंदर कुछ आइडियाज हैं जो इनेट आइडियाज हैं, वी आर बोर्न विद दोस आइडियाज ऑफ लॉजिक, otherwise the world outside would not make sense to us, say the rationalists. Now it emphasized certain rather than merely probable knowledge as the goal of inquiry, iron conclusions of deductive logic. तो वो कहते थे knowledge is that it's like deduction, and deductive logic must be used to find out what the truth is, and premised upon the view that substance is real and that substance has an underlying principle of unity. और हमारा काम ये कि deductive logic के जरिए हमने वो principle of unity ढूंढना है। अब दूसरी तरफ एम्पेरिसिस्ट थे, वो कहते थे नॉलेज इज ए पोस्टेरियोरी, व्हिच मींस कि हम जब चीजों को टच करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, दैट इज द सोर्स ऑफ आवर नॉलेज। दे रिजेक्टेड डिडक्टिव एंड इनेट नॉलेज। वो कहते थे वी आर लाइक अ टैबलर ऑफ वी आर लाइक अ क्लीन स्लेट व्हेन वी आर बोर्न। हमारे जहन में कोई आइडियाज नहीं होते, सारे आइडियाज जो है हम अपने एक्सपीरियंसेस से तलाश करते हैं। एंड दे रिलाइड देयरफॉर आल्सो ऑन द इंडक्टिव मेथड ऑफ इंक्वायरी, यानी कि जिस तरह बेकन का मेथड था कि बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस करो, उसमें से लॉ डिराइव करो। अब समझने वाली बात यह है, एक अहम बात यह है कि रैशनलिस्ट भी इंडक्टिव लॉजिक यूज करते थे और एम्पेरिसिस्ट भी डिडक्टिव लॉजिक यूज करते थे, मगर ऑन द होल इनको इस तरह से सेपरेट किया जाता है। सो अब देखो, इन दो ट्रेंड्स को एक बंदे ने पहले सिंथेसाइज करने की कोशिश की। उस बंदे का नाम था इमैनुअल कांट। उसने कोशिश की कि सब उसको कहते थे रैशनलिस्ट और एम्पेरिसिस्ट जो है, you can't put them together. Immanuel Kant ने कहा yes I can put them together. That's what he tried to do. और उसने एक आइडिया बनाया जिसको हम कहते हैं ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म, और उसमें उसने ये कहा कि हमारे पास डिफरेंट लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। कुछ आइडियाज हमारे जहन के अंदर इनेट हैं और कुछ आइडियाज जो हैं हम बाहर से अक्वायर करते हैं। इसको आप वो बड़ी सारी कैटेगरीज में डिवाइड करता है, एनालिटिक ए प्रायोरी, सिंथेटिक ए प्रायोरी, सिंथेटिक ए प्रायोरी, सिंथेटिक एंड सो ऑन। वी डोंट हैव टू गेट इनटू दैट, ठीक है। जस्ट नो कि वो काफी कॉम्प्लेक्स किस्म की चीज बनाता है, चूचू का मुरब्बा। और उसमें वो ये कहता है कि जी ऐसी चार चीजें हैं, सॉरी 1 2 3 4, हाँ 4 चीजें जो हमारे इनेट आइडियाज हैं। क्वांटिटी, यूनिटी, प्लुरैलिटी, टोटलिटी, क्वालिटी, मोडालिटी, रिलेशन। ये चीजें हम पैदा होके, ये आइडियाज, ये फंडामेंटल लॉजिकल कैटेगरीज के साथ हम पैदा होते हैं और फिर हम जो है वो चीजों को, दुनिया को समझते हैं, ठीक है। अब ये एम्पेरिसिस्ट और रैशनलिस्ट की जो आइडिया है, इसको एक डब्बे में बंद कर दो और उसे कहो सर मुझे समझ नहीं आया, डजंट मैटर, लेट्स पुट अ पेन इन इट, डजंट मैटर इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट, क्योंकि हमने आज हेगल को समझना। अब हेगल बादशाह जो है वो ये कहते हैं कि तुम लोग सब बोंगिया मार रहे हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुमने सही सिंथेसिस नहीं किया। मैं तो बताता हूँ कि क्या असल मामला है। मसल मामला ये है सबसे पहले कि आपने जो पूरी की पूरा सिनारियो बनाया, चाहे आप रैशनलिस्ट हैं या आप एम्पेरिसिस्ट हैं, उसमें आपने एक इंडिविजुअल को एक ऑब्जेक्ट के सामने ला खड़ा किया है। जैसे कि एक इंडिविजुअल एक ऑब्जेक्ट पे कॉन्टेम्पलेट कर रहा है और सोच रहा है कि ये जो मेरे सामने फल है, ये मैं खा सकता हूँ, नहीं खा सकता, इसका नाम मुझे सेब रखना चाहिए, इसका नाम मुझे अमरूद रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए। बट एक्चुअली जब हम आइडियाज को देखते हैं तो आइडियाज आर नॉट इंडिविजुअल, दे आर सोशल। आइडियाज तो होते ही सोशल है कि आपने डिस्कस किया, आपने कहा अरे मेरा ख्याल है इसका नाम हमें सेब रखना चाहिए। मरियम ने कहा कि नहीं, इसका नाम सेब नहीं रखना चाहिए, इसका नाम अमरूद रखना चाहिए। सजाद ने कहा सर ये ना ये सेब है ना ये अमरूद है, ये तो माल्टा है वगैरह। फिर हमने आपस में डिस्कस किया, हमने कहा हाँ एक्चुअली, फिर वो सजाद जो है माल्टा लेके आया, देखें सर इसका रंग भी मैच करता है वगैरह। हमने कहा हाँ ठीक कह रहा है, ये तो माल्टा है। इस प्रोसेस में हमारे आइडियाज बनते, यानी कि नॉलेज जो है एक्चुअली एक सोशल प्रोसेस है। आप भी यहाँ बैठे मेरी बक बक सुनी जा रहे हैं पता नहीं पूरे सेमेस्टर से, तो वो एक सोशल प्रोसेस ही है ना जिसके अंदर आप मेरे नुक्ता नजर सुन रहे हैं। और ये हमारे आइडियाज हमेशा इवॉल्व कर रहे होते हैं। इवॉल्व कैसे कर रहे होते हैं कि पहले आपने एक बेरी पकड़ी, उसका नाम आपने बेरी रखा, आपने खाई, उसने कहा बड़ी मीठी है। एक और बेरी आपने पकड़ी, वो खाई, उसने कहा ये भी बड़ी मीठी है। पहले आपने दोनों का नाम बेरीज रखा हुआ था, फिर आपने देखा कि एक थोड़ी लाल है एक थोड़ी नीली है। लाल वाली का नाम आपने रख लिया स्ट्रॉबेरी, नीली वाली का नाम आपने रख लिया ब्लूबेरी। इस तरह करके वो डिफ्रेंशिएट होती चली गई और डेवलप होती चली गई। और तो इस तरह ये डायलेक्टिकली आगे की तरफ चीजें डेवलप हो रही और आपकी नॉलेज डेवलप हो रही। हर वक्त हम नई कैटेगरीज और नई कैटेगरीज बना रहे हैं।
तो गाइस्ट जो है, द स्पिरिट, द माइंड इज द ट्रांसेंडेंटल इवॉल्विंग कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ ह्यूमैनिटी। सो एक हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है जिसको द माइंड कहता है, द स्पिरिट कहता है, गाइस्ट कहता है, जो ये सारे, जिसके अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा है। अब ये क्या बला है, इसको समझने की जरूरत है, मगर पहले मैं जरा कॉन्शियसनेस को समझा दूं कि क्या है। तो एक है सेंस सर्टेनिटी। सेंस सर्टेनिटी क्या है? द इंडिविजुअल माइंड्स इनिशियल अटेम्प्ट टू ग्रास्प द नेचर ऑफ द थिंग। आपने एक फल पकड़ा और आपने कोशिश की, ये सेब है, ये अमरूद है, ये माल्टा है, क्या है? ये आपने इंडिविजुअली किया। Number 2 is perception. The individual is not simply standing directly opposite objects, but mediates between individuals and collective understanding. That is between his immediate perception and the ideas about the world that he shares with society. अब आप जो है वो सेब को लेके गए सजाद के पास, कहा यार मेरा ख्याल है ये सेब है, मगर हो सकता है ये माल्टा है, या आपने सोसाइटी से डिस्कस किया, फिर आपको पता चला कि सोसाइटी तो इसको माल्टा कहती है, फिर आपने फैसला किया कि मैं भी इसको माल्टा बोलूंगा। तो ये सेकंड लेवल हो गया। पहले लेवल पे इंडिविजुअल ने कन्फ्रंट किया किसी चीज को, दूसरे लेवल पे फिर इंडिविजुअल ने कन्फ्रंट किया देयर अंडरस्टैंडिंग विद सोसाइटीज अंडरस्टैंडिंग, इसको हम परसेप्शन कहेंगे। और फाइनली आप जो थर्ड लेवल पे पहुंचेंगे, विच इज he refers to his understanding, is the differences between perception gave rise to uncertainty. We find new grounds for certainty by generating new concepts that smooth over contradictions. Hence universal categories continuously evolve through a dialectical process between senses and essences and between individual and collective consciences. So इसका मतलब ये हुआ, वही मैं माल्टे वाली एग्जांपल देता हूँ। इंडिविजुअली आपने देखा, आपने सोचा है कि मैं इसको सेब बोलूंगा, फिर उसके बाद आपने जो है सोसाइटी से उसको डिस्कस किया, सोसाइटी उसको वो बोलती है, फिर आपने फाइनली उसको किसी तरह रिजॉल्व किया। या हो सकता है आपके पास दो मुख्तलिफ बेरीज थी, उनको दोनों को आपने एक ही नाम दिया हुआ था, फिर किसी ने सजेस्ट किया कि इनके दो डिफरेंट नाम होने चाहिए क्योंकि कलर्स और टेस्ट डिफरेंट, एंड सो दिस इज हाउ सोसाइटी देन डेवलप्स फ्रॉम इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस टू अ कलेक्टिव डायलॉग अबाउट दोस थिंग्स, एंड फ्रॉम दैट डायलॉग टू एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट दोस थिंग्स. History explains that the German term for history is derived from the verb to happen. So what is history? History is that which happens, and analogous to becoming, synthesis of being and nothing. Everything present contains some elevated aspect of the past. So इसी तरह जिस तरह से nature आगे की तरफ जाती है, वो हेगल कह रहा है history भी आगे की तरफ जाती है। अब हम आगे जाते हैं subject object contradiction. So essence points to the qualities of the object. This sets up the contradiction between object, which is the thing in itself, and subjective logic, which is the thing in our perception. यानी कि एक वो चीज है जो सेब है, उस एक मेरी परसेप्शन है उस सेब के बारे में, ये मेरी सब्जेक्टिव उसके बारे में नॉलेज है कि ये सेब है या माल्टा है, और एक वो है द थिंग इन इटसेल्फ जो कि वो एक्चुअली है। इन दोनों के दरमियान कॉन्ट्रडिक्शन है। दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डायलेक्ट एंड इज रिजॉल्व्ड इन द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियस, दैट इज फिलॉसफी। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये फलसफे के मैदान में जाके हल होता है। अब इस सेक्शन को खत्म कंक्लूड करते हुए वो ये कहता है कि अब आप देखें कि जो यूनिवर्सल लॉज ऑफ डायलेक्टिक्स मैंने बताने थे ऑफ चेंज, वो मैंने डिराइव कर लिए, इसे इधर से उसने डिराइव कर लिए, वो ये सब चीजों पे एप्लीकेबल होंगे, लॉजिक पे भी, नेचर पे भी और हिस्ट्री पे भी। और वो क्या लॉज है? सबसे पहला यूनिटी एंड इंटरपेनिट्रेशन ऑफ ऑपोजिट्स, वो मैंने डिस्क्राइब ऑलरेडी कर दिया, मैं दोबारा डिस्क्राइब कर देता हूँ कि कोई भी तस्वर, कोई भी कॉन्सेप्ट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट इट्स ऑपोजिट कॉन्सेप्ट एट द सेम टाइम. And in that sense, the two concepts interpenetrate each other. They rely on each other. They have to exist with each other. They cannot exist without each other. Quantity into quality, as one of these contradictory poles, being and nothing, life and death, they are constantly sort of in flux and in motion. As one thing, develops, जिस तरह वो black dragon और white dragon था. अब black dragon छोटा सा dragon है, white dragon बड़ा है. मगर कुछ वक्त आएगा कि ब्लैक ड्रैगन बड़ा होता गया, व्हाइट ड्रैगन छोटा होता गया, और एक वक्त आएगा कि ब्लैक ड्रैगन इतना बड़ा हो जाएगा कि जो ओवरऑल बॉल का रंग आपको नजर आ रहा होगा वो ब्लैक नजर आ रहा होगा. तो इसी तरह इसको हम कहते हैं क्वांटिटी टर्न्स इनटू क्वालिटेटिव चेंजेस, क्वांटिटेटिव चेंजेस टर्न इनटू क्वालिटेटिव चेंजेस. मिसाल के तौर पे आप छोटे से थे, आहिस्ता 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 आप बड़े होते गए, किसी एक पॉइंट पे आके people started treating you as an adult. We don't know exactly what that point is, but at some point or another people started to treat you like an adult. You became an adult. What that point is I don't know, but some point does exist. एक आखिरी एग्जांपल, आपका क्या नाम है? अगर फैजान के सर से मैं एक बाल निकाल दूं तो क्या ये गंजा हो जाएगा? बताओ. नहीं. दो निकाल दूं गंजा हो जाएगा? तीन, सारे लाओ ना थोड़ा सा पता चले. 4, 5, 6, 7, 10, 100 बाल निकालूं गंजा हो जाएगा? 1000 बाल निकालूं गंजा हो जाएगा? अच्छा, 10,000 बाल निकालूं गंजा हो जाएगा? कोई ना कोई पॉइंट आएगा जिसके ऊपर आप ये कहेंगे
सर आप बेचारे को आपने गंजा कर दिया, ऐसा कोई पॉइंट आएगा ना। मगर शायद आप एग्जैक्टली नहीं ये कब बता सकते कि ये 10,000 वाले बाल पे हुआ था, या 10,003 वाले बाल पे हुआ था, या 9,999 वाले बाल पे हुआ था। मगर ये आप जरूर कह सकते हैं जब आप एक गंजे बंदे को देखेंगे और अजा फैजान के ब्यूटीफुल लॉक ऑफ हेयर्स को देखेंगे, आप ये जरूर कह सकेंगे कि वो गंजा है और ये गंजा नहीं है। ये आप कह सकते हैं ना। अब दिन और रात में भी ऐसे ही आप देखें, दिन होता है, आहिस्ता आहिस्ता लाइट कम होती चली जाती है, लाइट कम होती चली जाती है, ठीक है, शाम आ जाती है। फिर शाम जो होती है ना, वो ऐसी चीज होती है ना, वो दिन होती है ना वो रात होती है, और फिर उसके बाद इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू नाइट। सो द क्वांटिटेटिव डिक्रीज ऑफ लाइट results in a quantitative decrease of light results in a qualitative change from day to night and then again from night to day. इसी तरह आप जिंदा हैं इस वक्त, जब आप की मौत होगी और सबकी होगी, तो इट्स नॉट एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इवन अगर मैं आपको गिलेटिन पे रख दूं तब भी वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नहीं होता, कोई ना कोई चीज आपकी चलती रहती है, काम करती रहती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसीलिए डॉक्टर्स भी जो है वो पहले कहते थे कि जब दिल खत्म रुक जाए तो फिर कहते थे मर गया दिल जब रुक गया। अब वो ये नहीं कहते, अब कहते हैं जब ब्रेन रुक गया तब। और आपको पता है मर भी जाएंगे तो आपके नाखून फिर भी ग्रो करते रहेंगे, आपके बाल भी ग्रो करते रहेंगे। तो कितनी अजीबोगरीब किस्म की बातें हैं। यस, सो डेथ इवन इज नॉट एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस बट अ काइंड ऑफ इलोंगेटेड प्रोसेस. It takes a little bit of time for you to die or to be born. So these are quantitative changes that lead into qualitative changes. Lastly, we can get into negation of negation. Negation of negation ये कि every time there is a qualitative change, we call that a negation. कि पहले आप कुछ और थे, अब आप कुछ और बन गए, यानी आप जो पहले थे उसकी negation हो गई है. Being has transformed into nothing. A young man is transformed into an adult. A living being is transformed into a dead body, etc. Something that was not alive has come alive. Birth, which is the most amazing thing. But what is the negation of the negation? That the cycle then repeats itself. That which came alive also at some point or another dies, but gives rise to new life, and so on. So it continues in a kind of spiral. It keeps going back and forth, like आज दिन है, फिर रात हो गई, फिर रात के बाद दोबारा दिन हो जाएगा। मगर अब ये दिन वो वाला दिन नहीं है जो कल वाला दिन था। ये आज का दिन था, फिर आज की रात हुई, फिर दोबारा से दिन हुआ, मगर ये दिन जो है अगला दिन है, फिर रात हुई, ये अगली रात है, फिर अगला दिन हुआ, ये अगला दिन है, फिर अगली रात, फिर अगला दिन, फिर अगली रात, फिर अगला दिन। साइकिल भी है हिस्ट्री में, नेचर में, फिलॉसफी में, मगर उस साइकिल के अंदर एक मूवमेंट भी है। अब याद करें इब्ने खल्दून ने कितना खूबसूरत से वो हिस्ट्री के साइकिल्स को डिस्क्राइब किया, मगर हेगल उससे एक कदम और आगे जा रहा है, कहता है साइकिल्स के अंदर भी साइकिल्स के जरिए ही मूवमेंट हो रही है, forward movement of history, ideas and so on. इसको वो कहता है negation of negation, और ये है the highest level of dialectics, जब किस तरह society change करके आगे की तरफ जाती है। अब इसकी application आप देखेंगे, सबसे पहले कुदरत में हम देखेंगे, फिर उसके बाद हम तारीख में देखेंगे। छोटा छोटा रखूंगा कुदरत का, तो क्योंकि एक्चुअल हमारा इंटरेस्ट जो है वो तो ऑब्वियसली पॉलिटिक्स है। आए नेचर में देखते हैं। नेचर में एंगल्स ने ये किताब लिखी डायलेक्टिक्स ऑफ नेचर, जिसमें इसने यूनिटी एंड इंटरपेनिट्रेशन ऑफ ऑपोजिट्स, क्वांटिटी इनटू क्वालिटी और नेगेशन ऑफ नेगेशन, तीनों लॉज ऑफ डायलेक्टिक्स को थोड़ा बहुत डिस्कस किया और शो किया कि किस तरह नेचर के अंदर जो मुख्तलिफ चीजें इवॉल्व हो रही होती, डेवलप हो रही होती, दे ओबे दीज लॉज ऑफ चेंज। वी वोंट गो इनटू डिटेल, बट वन एग्जांपल दैट ही गिव्स इज ऑफ कोर्स द ट्री ऑफ लाइफ। ट्री ऑफ लाइफ में आप देखें कि ये जिंदगी कहीं से शुरू हुई, और जिस तरह शाखें निकलती हैं जिंदगी की, इसी तरह शाखें निकल रही हैं मुख्तलिफ जिंदगी की, और हर शाख पे उल्लू नहीं बैठा, एक शाख पे उल्लू जरूर बैठा है, मगर हर शाख पे कोई मुख्तलिफ किस्म का जानवर बैठा है। और अगर हम इनकी तारीख ट्रेस करें पीछे की तरफ, तो आपको इन जानवरों के दरमियान कोई कॉमन जानवर एक कोई ऐसा जानवर नजर आता है जो हो सकता है आप एग्जिस्ट नहीं करता, जो उन दोनों जानवरों के दरमियान कॉमन था, उनका कॉमन एंसेस्टर होता है। जिस तरह दरख्त जो है वो यूं करके एक तरह डेवलप करता है, स्पीशीज जो है डिफरेंशिएट करती हैं, इसी और जिंदगी के अंदर डाइवर्सिटी पैदा होती है, और कई ब्रांचेस जो है जिंदगी की वो तबाह बर्बाद भी हो जाती, खत्म हो जाती। तो इसी तरह कुदरत के अंदर भी होता है। बल्कि कुदरत के अंदर क्या, हम खुद भी इसको कर सकते हैं, और हम करते हैं। मिसाल तौर पे जो डॉग ब्रीडर्स हैं और हॉर्स ब्रीडर्स हैं और एनिमल ब्रीडर्स हैं, वो हर वक्त इस प्रोसेस को करते हैं। वो एक कुत्ते को लेते हैं, एक और कुत्ते के साथ उसका क्रॉस करवाते हैं, और मखसूस वो चाहते हैं कि इस किस्म के फीचर्स पैदा हों। प्रीटी सून वो करते 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 कोई और कुत्ता ही बना देते हैं।
और वो जो नया कुत्ता बना देते हैं इतनी दफा, हाँ इतनी दफा क्रॉस ब्रीड कह रहा हूँ, क्रॉस करके ब्रीड करके वो जो नया कुत्ता बनाते हैं वो इतना सा एक कुत्ता इतना छोटा सा होता है और एक इतना बड़ा होता है। ये नेचुरल कुत्ते नहीं है। जिस तरह वो ग्रेट डेन है, यू थिंक इट्स कुत्ता तो है ही नेचुरल नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग कुत्ता तो हमने खुद बनाया है। जी हाँ, आपको एक और बात बताता हूँ दिलचस्प, चिकन खाते हो ना, रोज खाते हो चिकन, चिकन नेचुरल नहीं है, चिकन हमने बनाई है। ठीक है, हाँ ये जो आज की चिकन हम खाते हैं, सिर्फ ब्रॉयलर चिकन की बात नहीं कर रहा, हमने ब्रीड किया उसको बाकायदा उस बर्ड को कि हमें ऐसा जानवर मिले जिसमें मैक्सिमम गोश्त हो और हम उसको खा सकें। सिर्फ हमारा मकसद ये था कि हम उसको खाएं। ये जो बिल्लियां हैं, ये बिल्लियां हमने खुद ब्रीड की हैं, हमने उनकी कई कई किस्म की खुद नस्लें बनाई हैं। जी हाँ, ये ब्रीडेड कैट्स हैं, इसीलिए वो जो हम कहते हैं ना पर्शियन कैट और वो साइमीज और ये वो उसका बड़ा हमारे लिए प्रेशियस, वो कई हंड्रेड्स ऑफ इयर्स के बाद वो जाके घोड़े जो खूबसूरत तरीन घोड़े होते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल ब्लैक ब्यूटी अरेबियन हॉर्सेस, वो अरब्स ने खुद ब्रीड करके बनाए थे। वो नेचुरली करेंगे, नेचर भी खुद एनिमल्स बनाता है, हम भी खुद एनिमल्स बनाते हैं। जी हाँ, डिड यू नो दिस? That's what breeders do all the time. हम भी अपनी पिजन्स भी बनाते हैं, हम अपनी मुर्गियां भी बनाते हैं। वो जो टर्की थैंक्स गिविंग पे अमेरिकन खाते हैं ना, वो टर्की नेचुरल नहीं है। वो टर्की कमबख्त जिंदा भी नहीं रह सकता। वो टर्की इतना मोटा हो चुका होता है, इतना उसमें गोश्त है, ना वो चल सकता है, ना वो उड़ सकता है, और ना ही वो ब्रीड कर सकता है। जी हाँ, द फार्मर्स एक्चुअली हैव टू ब्रीड द टर्कीज देमसेल्व्स बिकॉज दे कांट ब्रीड नेचुरली. That's how unnatural these animals are. And we make them. Why do we make such unnatural animals? Because we want to eat them. Sometimes we want to pet them. Wheat, जो आप रोटी खाते हैं, ये नेचुरली करेंग रोटी नहीं है, ये नेचुरली करेंग चावल नहीं है। ये चावल, ये रोटी हमने बनाई। हमने ऑब्वियसली बनाई इस सेंस में तो नहीं है कि हम हमने उसको एक प्लांट लिया, उसको आहिस्ता 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 हम एक डायरेक्शन में ब्रीड करते गए और उसको हमने वो चीज बना दी जो हम आज व्हीट की शक्ल में खाते हैं। ये जो आप व्हीट खाते हैं, ये तो मैक्सी पाक सीड है ना। ये मैक्सी पाक सीड एक लैब में बनी थी, अमेरिकनों ने बनाई थी, और फिर अमेरिकनों ने हमें आके दे दी, ये लो, ये प्लांट करो, ये तेजी से व्हीट निकलेगी। तो ये नेचुरल चीजें नहीं है, ये हमने खुद बनाई है। तो नेचर भी बनाता है, हम खुद भी बनाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है ना, एक किस्म का जिसको कहना चाहिए, एंगल्स पॉइंट आउट कर रहा है, डायलेक्टिकल प्रोसेस है, जिसमें चीजें यूं डिफरेंशिएट करती हैं, दे ग्रो लाइक फ्लावर्स। और फ्लावर्स, सो मेनी फ्लावर्स वी क्रिएट। कभी आपने वो रोजेस देखे हैं जिनमें आधा फूल जो है वो एक रंग का होता है, आधा फूल दूसरे रंग का होता है? देखें किसी ने? यार लड़कों, कोई रिसर्च किया करो यार, आइंदा कभी को फूल भी देना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो हमने बड़े किस्मों के फूल बनाए हुए हैं जिनमें कई किस्मों के ब्यूटीफुल रंग होते हैं, ट्यूलिप्स बड़े बड़े किस्मों के होते हैं। So people do this all the time. It's not even something unnatural. So, I mean, it's not unnatural in the sense that we are part of nature and we're doing it. So anyway, so all of this is part of the dialectics of how nature works. अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब इससे क्या साबित हुआ? हेगल कहता है the rational is real, the real is rational. ये उसकी one of the most famous quotations है, इसको कहीं नोट कर लो। अब जब आप अपनी अम्मी को मिलेंगी ना, या अब्बू को मिलेंगी, अब्बू कहेंगे आप क्या सीखा आपने लम्स में, तो आप कहना अबू, द रैशनल इज रियल एंड द रियल इज रैशनल। और अबू ने क्या कह रही हो, ये ऐसे क्या ही हो? ऑफ कोर्स इफ द रियल इज रैशनल देन द रैशनल विल बी रियल, दे आर बोथ इक्वल टू ईच अदर, दिस इज अ टॉटोलॉजी। मगर what does Hegel mean by this? It's very interesting. He says, बाइबल के अंदर लिखा है इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड। किसी ने पता नहीं बाइबल पढ़ा या नहीं पढ़ा, मगर बाइबल में लिखा है इन द बिगिनिंग देयर वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। अब जो लफ्ज इस्तेमाल किया है फॉर, हम ट्रांसलेशन करते हैं द वर्ड, मगर जो ओरिजिनल लफ्ज है बाइबल में वो है इन द बिगिनिंग वाज द लोगोस एंड द लोगोस वाज विद गॉड एंड द लोगोस वाज गॉड। लोगोस इज द सेम वर्ड दैट इज द कॉमन वर्ड फॉर लॉजिक। अब ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है। अब हेगल इससे निकालता है गॉड इज बेसिकली लोगोस। दैट्स व्हाट द बाइबल आल्सो इज सेइंग। God is logos, the logic, the logos created this natural world. God created this natural world. If God is the logos created this natural world. There's a logic and principle in it. But in nature, the logos has lost itself, its unity, and splintered. What does he mean by that?
कि अब नेचर में हमें बहुत सारे मुख्तलिफ फिनोमेना मिलते हैं, सब एटॉमिक फिनोमेना है, न्यूक्लियर फिनोमेना है, एनिमल लाइफ है, प्लांट्स हैं, प्लैनेट्स हैं, ये है वो, बहुत सारी किस्म की चीजें मिलती हैं। कोई हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, कोई केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, कोई बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, सारी स्प्लिंटर्ड है। तो महसूस ऐसे होता है कि दिस इज, इतने सारे मुख्तलिफ कवानीन पढ़ने पड़ते हैं, कभी बॉयल्स लॉ पढ़ना पड़ता है, कभी बॉयल निकल आते हैं बॉयल्स लॉ पढ़ते पढ़ते, कभी आपको आइंस्टाइन की फलानी थ्योरी ऑफ ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर और रिलेटिविटी, इतनी सारी मुख्तलिफ चीजें पढ़नी पड़ती हैं, दे ऑल सीम स्कैटर्ड, there's no unifying logic to them. But Hegel is saying, yes, there is a unifying logic to them. They appear to be splintered, but they're not. The Logos has merely concealed its unity. Nature reveals itself as so many successful attempts of the Logos to emerge from the state of otherness and present itself to us. यानी कि नेचर के अंदर, चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कोई भी पढ़ रहे हो, there is a logic behind every science that you study, everything that you study, and all the logic in every field that you study is the same, and that logic is God himself. So God is reason, he says. Reason in its most concrete representation is God. God governs the world. What does he mean? Reason governs the world. The content of his governance is the fulfillment of his plan, is world history. World history is nothing other than the actions of nature and humanity, all of which God created. And God is that logic, that thing that's guiding everything. So what does he mean when he says the real is rational? The real is reason. The world that exists is based on reason. And reason is real. The rational is real in the sense that when you study the world, you're also simultaneously studying the logical principles that govern the world, and that is nothing other than God. God created the world, and when you study the world, you are also studying, in a certain sense, the mind of God. The study of nature is therefore the study of the logos that form nature. To study nature is to study God. Science is also the study of God. कैसी अजीबोगरीब बात, साइंस और रिलीजन को उसने दुल्हन करके रेकंसाइल कर दिया एक दूसरे के साथ. Humans are also part of that nature. अब एक और गूगली आने लगी है. Humans are also part of that nature created by logos. ठीक है, हम भी इस कुदरत का हिस्सा हैं और हम ही इस कुदरत को समझने की कोशिश कर रहे हैं. ये कितनी अजीब सी बात है. तो इसका मतलब है नेचर इज ट्राइंग टू नो इटसेल्फ. हम भी नेचर ही है ना, हम भी नेचर का हिस्सा है. तो नेचर इज ट्राइंग टू नो इटसेल्फ. सो logos creates the world, nature, and nature is trying to understand itself, and in understanding itself, it's understanding the logos that created the world, of which it is also a part. So logos created and reflects on itself. Yes, because he is denying the law of non-contradiction as a logical, he claims that's a logical fallacy. That's exactly his criticism of Aristotle, that Aristotle's law of tautology and law of non-contradiction is wrong. It's not wrong because at a given time things don't change, but it's wrong because it denies the possibility of becoming. If something is either being or not being, cannot be being and not being at the same time, then there can be no movement, because becoming is a process of being and not being at the same time. That's the denial of Aristotelian logic of Hegel, and that's the key aspect that that needs to be understood. देखो ना, Socrates का point of view जो Aristotle में reflected है, वो non-contradiction का point of view है. Something can either be or it can either not be. If something exists, then it does not exist. But what Hegel is showing is that that's true if I take a crack snapshot in time. That's true if I take a snapshot in time. If I stop time somehow. But time never stops. That which exists is constantly dying. That which does not exist is constantly being born. Planets are being born. Solar systems are being born. Galaxies are being born. Who knows? This universe may be born and will finish, etc. I don't know. So everything is in a process of becoming. And the process of becoming always is the transformation of being into not being, because becoming is to become something that you are not. Obviously, if I'm a child and I become an adult, when I was a child, I was not an adult. When I was an adult, I'm not a child. So that which I was not, I am. That which I am, I was not. That's how confusing actually life is. That Aristotelian logic only works if you stop time. But can you stop time? No. It's just a mental abstraction he's done.
And if you do that mental abstraction, you can't ever understand what it was that Hegel wanted us to understand: change. Now, as soon as you bring time into the picture again, things are changing. That which exists becomes that which does not exist. That which does not exist comes into being. So how can you explain that? The process of being turning into nothingness, and from nothing something being born, is actually very much part of everyday experience. And it's a contradiction. That contradiction can only be understood if we throw away the metaphysical logic of Aristotle, which relied on a static view of the world, which itself didn't really either explain change, nor did it refute it. It just sidestepped the issue by subtracting the possibility of change entirely from the equation of logic. Obviously, logic must also be able to explain, if it is really logic, how change occurs. The logic that Aristotle is proposing can't do that. That's the deficiency of the Greek thinking that Hegel challenged. Okay, now to recap what we discussed before the break. पहली बात तो ये है कि हेगल ने अपने laws of dialectics निकाले by a metaphysical examination of being and nothingness. उसमें उसने 3 laws निकाले: law of unity and interpenetration of opposites, quantity turns into quality, and negation of negation. ये काफी मुश्किल काम है. पूरा सेमेस्टर, साल कई साल लग जाते हैं हेगल को समझते हुए. मैं आपको कंडेंस्ड वर्जन 1 घंटे के अंदर दे रहा हूं. मुझे पता है कि ये मुश्किल है, मगर जस्ट गो विद इट फॉर नाउ. ठीक है? मगर दिस इज नॉट द पार्ट दैट्स इंटरेस्टिंग फॉर अस, ऑल्दो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट इटसेल्फ. मगर ये लॉज अब वो अप्लाई करेगा पहले नेचर पे, फिजिकल वर्ल्ड पे, और ये साबित करता है कि फिजिकल वर्ल्ड में जो चेंजेस हमें नजर आती हैं, चाहे वो ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज हो, चाहे वो बर्थ एंड डेथ का साइकिल हो, चाहे वो बॉयल्स लॉ हो और मोशन हो और मैकेनिक्स हो या फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, उन सब में वो डायलेक्टिकल लॉज ऑफ मोशन आपको नजर आएंगे. मगर अब उस तरफ आता है जिस तरफ हमें दिलचस्पी है, और वो ये कि तारीख पर और फलसफे पर इसकी किस तरह, क्या इसका इतलाक होता है, क्या एप्लीकेशन होती है. तो हेगल जिस जमाने के अंदर लिख रहा था, आपको पता ही है ऑलरेडी कि अमेरिकन रेवोल्यूशन भी हो गया था, और उससे ज्यादा जरूरी बात यह थी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया था. और हेगल लिखता है, द स्पिरिट ऑफ मैन हैज ब्रोकन विद द ओल्ड ऑर्डर ऑफ थिंग्स. इंसान जो है ना, वो पुराने नक्शे कोहन को जो है ना मिटा रहा है और नए तौर तरीके अपना रहा है. और फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज रैपिडली जर्मनी के अंदर फैल रहे थे, और जर्मनी के अंदर भी नया फलसफा पैदा हो रहा था, जिसको हम कहते हैं द जर्मन फ्रेंच रेवोल्यूशन. जर्मन फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या मुराद है कि जर्मनी ने भी ये सोचा कि हम भी फ्रांसीसी इनकलाब करेंगे, मगर क्योंकि हम जर्मन हैं तो हमने फ्रांसीसी इनकलाब जर्मन तरीके से करना है. जर्मन तरीके से फ्रांसीसी इनकलाब कैसे करते हैं? फलसफा लिख के. तो दैट्स व्हाई इट जनरेटेड अ फैंटास्टिक, फिनोमिनल फिलोसॉफिकल मूवमेंट. और इसके बाद, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, जर्मन फिलोसफी जस्ट ब्लूम्ड लाइक एनीथिंग. और उसमें आप इमैनुअल कांट को भी कहेंगे हम, उसमें हम ऑब्वियसली हेगल को भी कहेंगे, उसमें हम कार्ल मार्क्स को भी कहेंगे, शेलिंग वगैरह बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कमाल कर दिखाया. और इसीलिए जर्मन फिलोसफी जो है अपने जमाने की सबसे एडवांस्ड फिलोसफी समझी जाती है. और आज भी जर्मन्स को पढ़ने से पहले कुछ 4-5 दफा कानों को हाथ लगाना पड़ता है, बिकॉज इट डिफिकल्ट टू रीड, हाईली एब्स्ट्रैक्ट. अब हेगल अपनी किताब फिनोमेनोलॉजी ऑफ द स्पिरिट, फिनोमेनोलॉजी ऑफ द माइंड, जिसमें वो हिस्ट्री को ट्रेस करता है, उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात आता है जिसको हम कहते हैं द मास्टर स्लेव डायलेक्टिक. पहले मैं ये डायलेक्टिक समझाऊंगा, फिर मैं समझाऊंगा ये हिस्ट्री पे कैसे हेगल अप्लाई करता है. हेगल बादशाह कहता है कि कॉन्शियसनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट नेसेसरीली इंप्लाइज सेल्फ कॉन्शियस. अगर मैं एक फल को देख रहा हूं, तो एक सेब को देख रहा हूं और मैं सोच रहा हूं ये सेब है, ये माल्टा है, जो भी मैं सोच रहा हूं, तो इसका मतलब है कि आई एम कॉन्शियस कि मैं किसी चीज, बाहर वाली चीज को देख रहा हूं, उसको मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं. मैं किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं. आई एम द सब्जेक्ट एंड आई एम लुकिंग एट एन ऑब्जेक्ट. आई एम द सब्जेक्ट इज द थिंकिंग एंड कॉन्शियस एंटिटी. 2 चीजें इसमें है इक्वेशन में. एक तरफ वो है जो सोच रहा है कि ये सेब है, ये माल्टा है, और दूसरी तरफ वो सेब और माल्टा है, वो तो नहीं सोच रहा ना, मैं सोच रहा हूं. जब हम ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, तो एक सब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है. द ऑब्जेक्ट इज द अनथिंकिंग और नॉट कॉन्शियस एंटिटी. ऑब्वियसली वो एक ऑब्जेक्ट है, तो वो तो सोच नहीं रहा.
At the human level, individuals become self-conscious when recognized by another. अब जब कोई ऑब्जेक्ट मेरे सामने आता है तो मैं उसको उठा लेता हूँ, चक मार लेता हूँ, देखता हूँ अच्छा है बुरा है जो भी, मैं उसको मैनिपुलेट कर सकता हूँ अपने फेवर में, अपने लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर वो पत्थर है तो मैं उठा के किसी फेंक सकता हूँ उसको, कुछ भी उसके साथ कर सकता हूँ, मैं उससे अपना घर बना सकता हूँ, जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके साथ मैं वो जैसे मेरा दिल चाहे मैं कर सकता हूँ। और जब मैं उसके साथ वो कुछ करता हूँ जो मेरा दिल चाहता है तो इन अ सर्टेन सेंस मैं अपनी मास्टरी ओवर द ऑब्जेक्ट दिखा रहा हूँ। मैं ये दिखा रहा हूँ मैं सब्जेक्ट हूँ, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी कोई सोच नहीं है, इसने वही करना है जो मैंने इसे करवाना है, इसकी अपनी कोई सोच नहीं। और जब मैं ये करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट से ये कुछ करवाता हूँ, तो उसमें ही मुझे अपनी सब्जेक्टिविटी नजर आती है कि देखो मैं ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कर सकता हूँ एज अ सब्जेक्ट, एज अ कॉन्शियस एंटिटी। कॉन्शियसनेस है ये चीज कि मैं किसी दूसरी चीज पर असरअंदाज हो सकता हूँ। अब क्या मसला बनता है कि आगे मेरे आ जाता है साजिद, सजाद, आगे मेरे आ जाता है सजाद। जब मैं सजाद को देखता हूं तो मुझे सडनली ये रियलाइजेशन होती है कि जिस तरह मैं दूसरे ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट कर सकता हूं, इस ऑब्जेक्ट के केस में मैं एक ऐसे ऑब्जेक्ट के सामने खड़ा हूं जो बजाते खुद एक सब्जेक्ट भी है, यानी कि वो खुद भी सोचता है। अब वो लगता बिल्कुल मेरे जैसा है, ऐसे मुझे महसूस होता है जैसे मैं अपना आईना देख रहा हूं, और मुझे दिल मेरा यही चाहता है कि जिस तरह मैं किसी ऑब्जेक्ट को या अपने आप को मैनिपुलेट कर सकता हूं, अगर मैं यूं करूं, मैं कहूं हाथ खड़ा हो जा, ये लो हाथ खड़ा हो। मैं सजाद को देखता हूं, ही लुक्स एग्जैक्टली लाइक मी, और समहाउ आई एम टू गुड लुकिंग फॉर यू, बट एनीवे मगर उसको देखता हूं, मुझे रिकग्निशन होती है कि ये मेरी जैसी चीज है, मगर मैं उसका हाथ नहीं खड़ा कर सकता, मैं अपना हाथ खड़ा कर सकता हूं, बट हिज हैंड एंड हिज बॉडी इज नॉट इन माई कंट्रोल। नाउ दिस क्रिएट्स अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर मी। One becomes aware of oneself by seeing oneself through the eyes of another. अब मुझे सडनली ये रियलाइजेशन हुई कि जिस तरह का मैं सब्जेक्ट हूं उसी तरह का सब्जेक्ट ये भी है। सब्जेक्ट से मतलब ये है कि सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस, जिस तरह मैं एक सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस हूं, मेरी एक सोच है, उसकी भी एक सोच है, ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो सब्जेक्ट है। वो जो चीज थी जो मैंने उठा ली और मैनिपुलेट कर ली जैसे मेरा दिल कर रहा था, ये उससे मुख्तलिफ है चीज है, इसकी तो अपनी कॉन्शियसनेस है, ये तो खुद अपने फैसले कर सकता है और करता भी है। One cannot have any concept of oneself without having actually experienced a moment of identification with others. अब देखो एक moment of identification हुआ। On the one hand, कि he is a consciousness, I am a consciousness. He is a subject, I am a subject. I am what he is. He is what I am. एक moment of identification हुआ। मगर at the same time एक unhappy consciousness पैदा हुई when two subjects confront each other. This is me, this is Sajjad, or we can do it the other way. This is me, this is Sajjad. ठीक है ना? The subject are astounded at the realization of the self as a foreign object. Suddenly मैंने ये देखा कि मेरे जैसा सब्जेक्ट कोई और भी है, जैसे मैं सोच सकता हूं, सोचने की सलाहियत रखता हूं, कोई और भी सोचने की सलाहियत रखता है। The subjects fail to recognize the self in the other. Each views the other as an object rather than as a subject. But क्योंकि मैं आउटसाइड वर्ल्ड को मैनिपुलेट कर सकता हूं, मैं ये भी ऑन द वन हैंड मैं देख रहा हूं कि सजाद जो है वो एक सब्जेक्ट है, ऑन द अदर हैंड वो मेरे से बाहर है, मैं उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तो ऑन द वन हैंड आई रिकॉग्नाइज इट इज अ सब्जेक्ट, बट ऑन द अदर हैंड आई आल्सो रिकॉग्नाइज बिकॉज ही इज आउटसाइड ऑफ माई सेल्फ, ही इज एन ऑब्जेक्ट दैट आई एम स्टेयरिंग एट। Every person you're staring at is an object to you, but they are self-conscious and they are hence also a subject. They become mesmerized by each other, Sajjad, you and me. We become mesmerized by each other and attempt to assert their will on the other. हम ऐसे हैं जैसे खड़े में इधर उधर एक्सपेरिमेंट करते हैं, इधर में हम ऐसे हैं जैसे हम एक खड़े में और मैं आपने वो करना जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपना हाथ खड़ा करता हूँ और दूसरा हाथ खड़ा करता हूँ। We're almost like mesmerized with each other. It's not identical, but it's almost like, what is going on here? Thank you for that, clapping. You did a great job. Almost like I'm looking at myself in the mirror, but it's not an exact mirror because he's not doing exactly what I'm doing. So Hegel says, on approaching the other, it has lost its own self, since it finds itself as another being. अब मुझे ये रियलाइजेशन हुई, पहले तो मैं समझता था मैं ही सिर्फ सब्जेक्ट हूँ पूरी कायनात में, अब मुझे रियलाइजेशन हुई कि मेरे जैसा कोई और भी है, मेरी यूनिकनेस खत्म हो गई एक तरह से, ठीक है। सो आई फील आई बिकम वेरी अनहैप्पी एट द आइडिया कि देयर इज समबडी एल्स हु कैन आल्सो थिंक। Secondly, it has thereby sublated that other, for this primitive consciousness does not regard the other as essentially real, but sees its own self in the other. मैंने सिर्फ यही सोचा कि like Sajjad is kind of like an extension of me,
not a separate individual as such, and I'm trying to impose my will on him. Thus, each subject treats the other as an object. This escalates into a struggle to the death. अब सजाद और मैं दोबारा से प्लीज आ जाओ जरा. अब हम दोनों आ गए हैं और हम जो है ना, पहले तो हम बड़े मेस्मराइज थे कि एक ही हो रहे हैं. अब जो है ना हम ये कह रहे हैं सजाद तुमने ये काम करना है. सजाद आगे से कहेगा सर मेरा दिल नहीं कर रहा. को करना है तुमने. अब देखो मसला ये बन गया कि वो नाराज हो गई. चले खैर, अब मसला ये बन गया कि मेरी बात नहीं मान रहा. अब क्या होगा? इसको बात मनवाने के लिए आप बताएं मुझे क्या करना पड़ेगा? सजाद मेरी बात मानो. अब सजाद जो है वो भी एक इंसान है. आपने कहा नहीं सर नहीं मानूंगा. इतना प्यार से किया कि अच्छा अब क्या होगा कि सजाद तेरी और मेरी जो होगी ना लड़ाई होगी हैं. अब हम जो है ना जोर लगा रहे हैं. हार जा. अब हम जोर थैंक यू सजाद. अब हम एक दूसरे का जोर लगा रहे हैं. किस चीज पे जोर लगा रहे हैं? टू सी कि किसकी विल दूसरे पे डोमिनेट करेगी. अब ये एसिमेट्रिकल रिलेशनशिप आपकी और मेरी है. किसी ना किसी की विल डोमिनेट कर जाएगी. वो डोमिनेट करने वाली विल कौन सी होगी? वो कहता है कि जब हमारी आपस में लड़ाई होगी ना कि किसकी विल डोमिनेट करती है, तो दिस विल बिकम्स अ डेथ मैच. अभी तो सिर्फ हमने आर्म रेसलिंग की है. डेथ मैच. इट विल एस्केलेट टिल द पॉइंट कि पहले मैं तुम्हें धक्का दूंगा, फिर तुम मुझे, फिर मैं तुम्हें, फिर तुम मुझे, और ये बढ़ता जाएगा. मैं तुम्हें चंड कराऊंगा. खबरदार मुझे आगे से कुछ कहा मैं मुक्का करूंगा. फिर उसके बाद मैं छुरी निकाल दूंगा. फिर उसके बाद जो भी है इट विल एस्केलेट. और फिर एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा कि आइदर ही और आई विल से ओके आई वैल्यू माई लाइफ. ये मुझे मारो नहीं प्लीज. एक ना एक को डर लग जाएगा. जिसको डर लग जाएगा वो सबमिट कर जाएगा. कहेगा आई एक्सेप्ट योर मास्टरी. आई एक्सेप्ट यू. नाउ वन सब्जेक्ट ट्रायम्फ्स एंड बिकम्स अ मास्टर, द अदर सबमिट्स एंड बिकम्स अ स्लेव. इसकी कोई एग्जांपल आपको चाहिए तो कभी आप देखें कि जब आप किसी नए स्कूल में जाएंगे, लम्स में आप नए नए आएंगे, तो लोग आपको पहले चेक करेंगे. अच्छा किन्ने को डाले ने मैं सीधा कर सकना कि नहीं. हाँ, अगर आप मे बी इफ यूर अ गर्ल देन अदर गर्ल्स आर लाइक इज शी नाइस, इज शी नॉट नाइस, डू वी मेक हर अ फ्रेंड और इज शी आवर एनिमी, आई डोंट नो व्हाट. यू हैव ऑल योर क्लिक्स और व्हाटएवर, राइट. एंड बॉयज में तो ये होता है. मैं बॉयज आई नो बॉयज में तो ये होता है. वी आर ऑलवेज साइजिंग ईच अदर. आर वी नॉट? मैं झूठ बोल रहा हूँ. आरंट वी ऑलवेज साइजिंग ईच अदर? चेक नहीं कर रहे होते कि अगर मेरी से लड़ाई हुई तो मैं उसको कुटापा फेर लूंगा कि नहीं. करे मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ. सच्ची सी तो मुझे कितने दोस्त चाहिए होंगे इसको हराने के लिए. आई डोंट नो. मेरे जमाने में तो ऐसे ही होता था. मैंने आपको कहानी तो सुनाई है ना कि जब मैं गाड़ी चला रहा होता था, कोई लड़का मुझे घूरी कराता था, वहीं से गाड़ी में घुमा के वापस जाता था. उसे कहता था घूरी की नुकराई. दैट्स अ डेथ मैच. ठीक है. एनीवे, एक ना एक ने सबमिट कर जाना है. एंड दैट जो सबमिट करता है बिकम्स अ स्लेव, दूसरा बिकम्स अ मास्टर. द मास्टर बिकम्स इंडिपेंडेंट एंड द स्लेव बिकम्स डिपेंडेंट. अब सजाद ने मेरी बात माननी है और मैं उसको हुक्म दूंगा, वो मेरी बात करेगा. द मास्टर सीज द स्लेव एज एन ऑब्जेक्ट नॉट एज अ सब्जेक्ट. मैंने सजाद को अपना गुलाम बना के एक ऑब्जेक्ट की तरह बना लिया जिसको मैं मैनिपुलेट कर सकता हूं, जैसे मैं बाकी ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट कर सकता था. मैं बड़ा खुश हूं क्योंकि जैसे मैं बाकी ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करता था, ये सब्जेक्ट जो है ये भी एक ऑब्जेक्ट बन गया है मेरे लिए. ये भी मेरा कहना मान रहा है. The slave is stuck in a position of reflecting on himself as a subject as the other. मैं उसको recognition नहीं दे रहा कि वो subject है, कि वो thinking being है. मैंने recognition सारी अपने लिए ले ली कि मैं thinking being हूं और उसने वो काम करना जो मैंने उसे कहना है. Whereas the master is able to ignore any attempt by the slave to view him as a subject or as the other. So slave जो है वो अपने ऊपर कह सकता है मैं subject हूं, मगर मैंने उसको subject नहीं मानना और उसने मुझे जो है subject मानना है और मैंने उसको object मानना. ठीक है. मैंने उसकी ऑब्जेक्टिफिकेशन कर. ये लफ्ज़ आपने सुना ना, डोंट ऑब्जेक्टिफाई women, यानी डोंट टर्न देम इनटू एन ऑब्जेक्ट. इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेक्सुअलिटी, इट्स आल्सो अबाउट द फैक्ट कि यू आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग देयर एजेंसी, देयर एबिलिटी टू टेक डिसीजंस एज अ सब्जेक्टिव बीइंग, एज अ सब्जेक्ट. यू टर्न देम इनटू एन ऑब्जेक्ट. ये प्योरली हेगल से खींचा गया. पूरा का पूरा सिमोन डे बोवार का सेकंड सेक्स और पूरा फेमिनिस्ट थीसिस जो है ना हेगल से खींचा गया. हाउएवर इन टर्निंग द स्लेव इनटू एन ऑब्जेक्ट, अब मसला बन गया सजाद. The master loses what he tried to gain. मैं क्या तुमसे लेना चाह रहा था? Recognition by another subject. मैं चाह रहा था कि ये मुझे एक्सेप्ट करे एज अ सब्जेक्ट, मगर मैंने इसको एज ऑब्जेक्ट बना लिया और फोर्स किया इसको टू रिकॉग्नाइज मी एज अ सब्जेक्ट, which is a false recognition. Because his subjectivity was not involved in that. I turned him into an object for him to recognize me as a subject, which of course a subject is no longer recognizing me as a subject, but now
What I perceive to be an object is recognizing me as a subject, which is no recognition at all. The subject has been turned into an object. The slave does not regard the master out of free will, but out of obedience for fear of death. So I failed to gain what I really wanted to gain, which was recognition by a subject of my subjectivity. Okay, now सजाद बेचारा जो है सारे वो काम करता है जो मैं से कहता हूँ. मैं कहता हूँ रोल कॉल लगाओ, वो रोल कॉल लगा देता है. मैं से कहता हूँ पानी लेके आओ, बेचारा पानी लेके आता है. मैं उसे कहता हूँ मेरे पैर दबाओ, मेरे पैर दबाता है. जो मैं उसे काम कहता हूँ वो करने के लिए तैयार है. मैं उसे कहता हूँ ताजमहल मुझे बना के दो, वो मुझे ताजमहल बना के देता है. ठीक है ना. काम जो है वो तो मैंने अपने गुलामों से करना है. तारीख में भी आप देखें कि आका जो है वो तो काम नहीं करता था ना. वो तो कहता था, हंटर किसी को पकड़ाता था, कहता है इसको मारो जब तक ये काम नहीं करता. सो काम कौन करता है? काम करता है स्लेव. थ्रू लेबर द स्लेव डेवलप्स ह्यूमन सिविलाइजेशन. गुलाम जो है, जो काम करने वाला है, वो सिविलाइजेशन बनाता है. मास्टर तो नहीं बना रहा होता, एक्चुअली वो काम कर रहा होता है. Through the process of labor, the slave is externalizing his her subjectivity into the object of labor. जब आप काम करते हैं और कोई चीज बनाते हैं तो वो आपने चीज बनाई है ना. आपके दिल, दिमाग, हाथ, पैर, क्रिएटिविटी से वो चीज बनी. इन अ सर्टेन सेंस वो आपकी एक्सटेंशन इनटू द रियल वर्ल्ड है. आपकी सब्जेक्टिविटी जो है वो उसने एक मटेरियल शक्ल इख्तियार कर ली. जिस तरह गॉड की सब्जेक्टिविटी ने इस दुनिया के अंदर एक मटेरियल शक्ल, दुनिया की मटेरियल शक्ल इख्तियार कर ली, इस तरह आपकी सब्जेक्टिविटी वो चीज बन गई जो आपने, वो मजमून बन गई जो आपने लिखा, वो पत्थर बन गए जो आपने तराशा, वो खूबसूरत बिल्डिंग बन गई, वो सब कुछ. अब इसकी तरफ जब आप देखते हैं, आप किसको देख रहे हैं? उन सब लोगों को भी देख रहे हैं आप जिनकी सब्जेक्टिविटी इसके अंदर गई हुई है, जिन्होंने इसको बनाया है. इंक्लूडिंग वो लोग जिन्होंने इसको प्लान किया है, इंक्लूडिंग वो लोग जिन्होंने इसका पत्थर काटे हैं, पत्थर लेकर आए. उन सब लोगों को आप देख रहे हैं, उनकी सब्जेक्टिविटी यहां पे ऑब्जेक्टिफाई हुई. अब क्योंकि उनकी सब्जेक्टिविटी वर्क्स ऑफ आर्ट, बिल्डिंग, सिविलाइजेशन में ऑब्जेक्टिफाई हो गई है. सारा आर्ट, आर्किटेक्चर, सोशल स्ट्रक्चर्स, आइडियोलॉजी इज नथिंग बट द एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ द गाइस्ट ऑफ द स्लेव, ऑफ द सब्जेक्टिविटी ऑफ द स्लेव. और स्लेव से मतलब वो स्लेव नहीं है जो कि सिर्फ महज कोई भी. स्लेव से मतलब एनीवन जो मातहत है दूसरे के. टीए भी इस सेंस में स्लेव है टू मी. आप भी इस सेंस में स्लेव है टू मी, क्योंकि आप मातहत है ना टू मी. मेरी विल डोमिनेट कर रही है, आपकी विल जो है, देखें आपका हाल क्या हो रहा है, थक रहे हैं, मर गए. ठीक है ना. Whose will is dominating? Mine. So you are, he's not talking about an economic relationship only. He's talking about a relationship between two consciousnesses. Basically that the laborer has externalized their subjectivity into this thing. But the laborer is God's creation. It's the spirit. The spirit has externalized itself into civilization. Remember, God, Logos, is the world, etc. So now what happens is, now the slave rediscovers himself as the creator of civilization and the real subject of history. क्योंकि जिस बंदे ने काम किया, बेचारा सजाद, जिस दिन रात मेहनत की, और मैं बैठा हुआ था इस तरह करके. ये देखो कैसे बैठा. ये बहुत जरूरी है कि आप देखें कि मैं कैसे बैठा हुआ. मैं तो ऐसे बैठा हुआ था, चिल मार रहा था. सजाद बेचारा सारा काम कर रहा था. तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि जो चीज दुनिया के अंदर बनी वो इसने बनाई, मैंने तो नहीं बनाई. मैंने तो उसे कहा ओए काम कर वगैरह, जो भी किया मैंने कहा. अब I am not the creator of this. This does not reflect my subjectivity. It reflects the subjectivity of those who did the work. So the slave, when he looks at the civilization that he creates, not just the economic slave, but all the people who जो किसी ना किसी सेंस में दबे हुए हैं, किसी भी सेंस में दबे हुए हैं, when they look at the civilization, they know they are the creators, the real creative brains behind that civilization. जब वो इस चीजों को देखते हैं तो वो कहते हैं ये मैंने बनाई, I am the creator. जब वो अपनी सब्जेक्टिविटी को एक्सटर्नलाइज कर लेता है, अब सजाद को, जिसको चाहिए थी मेरे से रिकग्निशन दैट ही इज अ सब्जेक्ट, जो मैंने उसको नहीं दी. मैंने उसको ये कहा कि तुम ऑब्जेक्ट हो, मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा. और मैंने जो उससे रिकग्निशन लेनी थी वो मुझे भी नहीं मिली, क्योंकि मैंने उससे रिकग्निशन जो ली थी वो तो फोर्स थी, वो उसकी फ्री विल की थी नहीं. मैंने उसको ऑब्जेक्ट बना के रिकग्निशन ली. अब उसने रिकग्निशन कहां से ली? मुझसे तो मिल नहीं रही थी. उसको रिकग्निशन कहां से मिली अपनी सब्जेक्टिविटी की? फ्रॉम द थिंग्स दैट ही क्रिएटेड और शी क्रिएटेड. फ्रॉम द एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ देयर सब्जेक्टिविटी इनटू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ लेबर, सजाद इज एबल टू से आई एम a creative being. I am a consciousness. I created. This is what I created. This is who this is me.
Now Sajjad suddenly does not require recognition from the master, because he gets or she gets recognition, not that he is a she, but the slave gets recognition from the objectification of the subjectivity of the slave. That means what the labor of the slave has created. How does this apply now on history? कहता है हेगल 3 मुख्तलिफ पीरियड्स हैं हिस्ट्री के. पहला है स्टेट ऑफ नेचर, जिस तरह हम डिस्कस करते आए हैं. दिस इज द realm of complete freedom. The mind has the intuitive contemplation of itself. It's like art almost. कि इस पीरियड के अंदर intuitive इंसान. He gets his recognition of his subjectivity. The slave receives recognition of their subjectivity from the objects, the objectification of their subjectivity. That means from the things that they create. I didn't create anything. No, that's not creation. That's not labor. I just basically threatened them that I will kill them, and that's why they submitted. I got them to submit out of fear. That's not labor, according to Hegel. I didn't create anything. I got them to submit because I put the fear of death into their minds. I'm going to kill them and disembowel them if they don't listen to me. That's how I did it. But I didn't labor myself. The upper class, the slave-owning class, is not the laboring class. Even the designs, etc., that big pharaohs, etc., made, they were made by other people who were the slaves of the pharaoh. So everybody who's working is actually working for somebody else. And the top guy or the top guys are not working. They don't need to. They get other people to work for them. That's the whole point of slavery, after all. And because they get other people to work for them, the people who work in history get self-recognition from the work they do. And the people who don't work in history get no recognition because they don't do any work. And they don't get recognition from the people that they wanted to get recognition to because that was forced. So I end up with no recognition. He ends up with not needing recognition from me or from anyone. And so now the dialectic gets flipped. At first, I had it out at the almost like I was the stronger party. मैंने उसको दबा लिया. और तारीख में जैसे civilization पैदा हुई, civilization didn't reflect me. It reflected all the people who did the work. So what happens? He no longer requires recognition from me. I can no longer compel him. The slave becomes free. The slave becomes the master. The master is left with nothing. Not even the recognition of him being the master. Yes, flip मारेगा. History में flip आएगा, says Hegel. Very Marxist. Marx takes it from here. आओ देखते हैं वो कैसा flip आएगा. पहले state of nature है. फिर एक period होगा जिसको वो कहता है yoke of necessity. This is the recognition of rights of others and morality. और फिर एक तीसरा phase आएगा, which is social morality, जिसके like you can call it communism or whatever you want to call it. आओ पहला stage तो हम समझ गए state of nature है. It's like art. It's the realm of complete freedom. It's before morality, before religion, before states. It's like primitive communism. And then we get into the second phase, which is yoke of necessity. Isme religion and morality is created. Morality is very, very important. The development of morality occurs. Mind feels the superiority of itself to particularization, limitations of finite things. And there are 3 great moments within this period of the yoke of necessity. Pehla period is Oriental religion. He studies all the religions and he categorizes them. Oriental religion is the first, which exaggerated the idea of the infinite. Only one person is free, a zeitgeist of subservience to the divine despot. यानी कि वही जो पुराना स्टीरियोटाइप था कि ईस्ट के जो लोग हैं वहाँ पे एक बादशाह जो है वो आज़ाद है और बाकी सब गुलाम है. वो डेस्पॉट का आइडिया जो पर्शियंस के साथ एसोसिएटेड था, डेस्पोटिज्म का आइडिया. उसके बाद ग्रेको रोमन रिलीजन आया. He said, which gave undue importance to the finite. A class of people was free while a serf class remained non-human. यानी कि क्लास ऑफ पीपल वाज फ्री इन एथेनियन स्टेट, जो वोट कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, मगर अक्सरियत जो थी वो गुलाम ही थी, औरतें वगैरह ये सब कुछ. और अब थर्ड स्टेज क्रिश्चियनिटी, जिस represents the union of the infinite and the finite. Every human is free by virtue of being human, and that the freedom of spirit compromises our most human nature. By virtue of being human and being God's creation, we are all equal because we are all created by the same God. So now this begins, he says, opens the possibility of a realm of equality. But religion itself, he says, is the product of this unhappy consciousness. This state जहाँ पे master और गुलाम जो है एक दूसरे से गुत्थम गुत्था है. Religion is the expression of the fear of objectification in the struggle for self-identification. यानी कि आपको डर है कि आप objectify हो जाएंगे, आप गुलाम
बन जाएंगी, किसी दूसरा आपको मातहत कर लेगा. He says that fear is what generates religion. One takes comfort in being God that exists purely for itself. There is something that exists that cannot be subjected. It exists only for itself, requires no identification from another. This provides a refuge from the struggle for self-recognition. So I will return to that state where I will no longer, to that being which no longer requires recognition in another. I will therefore no longer require recognition in another. Religion is a state, therefore, in the evolution of human consciousness. It's not the end product. It's just one stage in developing consciousness. It is not the highest stage of consciousness even, says Hegel, but only self-conscious in pictorial or poetic form. It's part of the stages of development of human civilization. As I've said, God is reason. Reason is not merely the struggle to create formal universal categories that can explain individual phenomena. Reason involves a self-conscious ego struggling to assimilate objects while having to fend off otherness, which is a threat to its existence as self-conscious being. So what is reason? Reason is in the constant state of the struggle of getting out of that sense of objectification by others. That is why our understanding of reason is also a constantly evolving phenomena. So reason itself, logic itself doesn't stop. It continues to develop. This is very much the scientific concept of how knowledge evolves. Knowledge doesn't stop. Logic doesn't stop. Logic की भी अपनी development. ये नहीं कि बस वो Pythagoras theorem discover हो गया, खत्म हो गया सारा किस्सा कहानी. 2 + 2 is equal to 4. Yes, in Euclidean mathematics is equal to 4. But non-Euclidean mathematics, it might not be equal to 4. The objective mind, therefore, is mind objectified in law, morality, and the state. So that's why Hegel is referred to as an objective idealist. Now, this will give rise to the ethical life. This is the highest stage of absolute knowledge, which is the starting point of science and philosophy. Philosophy transcends the limitations of religion and attains absolute truth in the form of reason. Philosophy gets to the heart of the actual problem. Religion gets to it in pictorial or poetic form, same thing, but philosophy gets to it in the most abstract manner without the need for all the embellishments, etc. All the truth in art, the first stage mein tha, religion is now contained in philosophy in a higher form. When I read of this, then I'm always often reminded of Ibn Rushd as well as Al-Farabi. But yeah, it's very much that philosophy now emerges in the third and highest stage of human evolution of thought. It is the highest, freest, and wisest phase of the union of subjective and objective mind, and the ultimate goal of all development is nothing other than philosophy. Now, you see that in this newest stage of civilization, which Hegel is analyzing, again, you see 3 different levels. Firstly, you see the family, which he calls the domain of love, the domain of altruism. Family का मकसद है बच्चे पालना, बच्चों को बड़ा करना, एक दूसरे से प्यार करना. फैमिली के अंदर गिव एंड टेक नहीं होता, फैमिली के अंदर गिव एंड गिव होता है, प्यार होता है, दूसरे के लिए मोहब्बत होती है. एटलीस्ट थ्योरेटिकली स्पीकिंग, कॉन्क्रीटली एग्जिस्टिंग फैमिलीज में नहीं होती होगी, बट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन कॉन्क्रीट एज अ कॉन्सेप्ट. ही इज इंटरेस्टेड इन फैमिली. इट्स द realm of love. Civil society, that is the market, is the realm of selfishness. Property is the embodiment of personality and individuality, and it leads to the polarization between the rich and the poor. And जब आप मार्केट में जाते हैं तो आप ये नहीं कहते कि मैं आपका क्या भला कर सकती हूँ. आप ये कहते हैं कि okay, I want this glass of water, I'm ready to pay you this much. I'm not giving you the money कोई altruistic reason की वजह से. I want a glass of water. It's all about selfishness, etc. The state, finally, is where the family का idea, which is just self-love, और वो जो इंडिविजुअल आइडिया सिविल सोसाइटी मार्केट का था, which is just self interest, दोनों एक दूसरे के साथ reconcile होते हैं. He says the state is the march of God. Oh my God, what does he mean? State is the march of God in the world, he says. कहता है the state has its roots in religion. It arises from ethical life given by religion. And it is only through the state that modern individuality, which is based in property, can be reconciled with collective belonging, which is based in family. ये दोनों पहलू हैं हमारी जिंदगी के, altruism and selfishness, दोनों पहलू हैं, और ये कहाँ reconcile होते हैं? रियासत में जाके. The state is the arena in which the contradictions of modern life can be dialectically, therefore, sublated. यानी कि individuality और collective being, belonging, दोनों जो है वो state के level पे जाके reconcile हो सकते हैं एक दूसरे के साथ. That's why state is the highest embodiment of the fundamental idea that animates a given society. इसलिए वो इसको समझता है. Enlightenment इसी बात को नहीं समझा,
और एनलाइटनमेंट लिबरल्स ने सारा मामला क्या बना दिया, इंडिविजुअल इंडिविजुअल इंडिविजुअल। हॉब्स जो है वो समझता है सारे इंडिविजुअल्स जो है मेरा गला काटने के लिए तैयार है, इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट में मैं उनसे बचता रहूं, इसलिए मैंने रियासत बनाई है। लॉक जो है वो ये समझता है कि हाँ इतने बुरे नहीं है सारे, मगर फिर भी मिस्टेक्स कर लेते हैं, तो मैंने रियासत इसलिए बनानी है कि वो मेरी प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करे, मेरी लाइफ वो वगैरह प्रोटेक्ट करे। अगेन इट्स अ वेरी इंडिविजुअल सेंट्रिक अप्रोच। और अपना रूसो को छोड़ देते हैं। हेगल जो है वो आके ये कह रहा है कि भाईजान यू आर नेग्लेक्टिंग द अदर साइड, यू आर नेग्लेक्टिंग that the principle of individual rights that we inherit from liberalism is flawed in that it posits a universal individual without any particular traits and without reference to social or cultural environment. ना वो जो इंडिविजुअल है ना वो ना मर्द है ना औरत है ना बाप है ना बेटा है ना बच्चा है ना भाई है ना बहन है ना पाकिस्तानी है ना पंजाबी है ना उसका कोई रिलीजन है, इट्स जस्ट एन एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअल। तो आप उस एब्स्ट्रैक्शन की लेवल पे समझ ही नहीं सकते, और उसमें भी आपने जो है ना चीजों को सारी को गुड मुड कर दिया। सो एनीवे, civil society therefore he says establishes abstract rights because it engages individuals as abstracts and universal subjects. It doesn't understand individuals as concretely existing individuals, कि concrete उनकी जरूरियात क्या है उनको abstract करके समझता है। हॉब्स उसको बिल्कुल abstract करके इंसान बना देता है। ये भी नहीं समझता कि कुछ इंसान जो है वो औरतें हैं, कुछ इंसान मर्द हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ ये हैं, कुछ वो हैं, जो भी टोटली एब्स्ट्रैक्शन कर देता है उनकी। इसलिए उनको ये कहता है एब्स्ट्रैक्ट राइट्स। And primal institution is the family. Family forms civil society, and on top of that is the state. The state stands for God himself in that certain sense, in the sense of being the highest principle that animates that society. Okay, so now ethical life consists in the feeling, the consciousness and the will, not of the individual personality and its interests, but of the common personality and interests of all the members in general. That is what the state brings together, because it doesn't represent just you, it doesn't represent just you, it doesn't represent just you, but it represents society as a whole. By represent, I don't mean in the sense कि आप वोट डाल के representation लेते हैं, but in the sense that it is the collective will of, it is formed out of the collective will of society, out of all of you people in some way or another coming together. So finally, what is history then? History, he says, the spirit is objectified as law, morality, and the state. The spirit being, in a certain sense, God, in a certain sense. The spirit, the logos, is objectified. It becomes object. The principle doesn't just remain a principle in the abstraction, but becomes a material world. It becomes a material world, and the principle is objectified in the material world. This engenders a contradiction, and that contradiction is negated and falls apart. A new, more complex idea that can overcome the contradiction and create a new kind of society takes the place of the old. So what happens is that the idea creates, God in a certain sense creates this world. The world is has a certain economy, it has a certain state, it has a certain family structure. वो आगे चलता है, आगे चलता है, आगे चलता है, मगर किसी लेवल पे आके वो एक कॉन्ट्रडिक्शन के अंदर फंस जाता है। जिस तरह ग्रेको रोमन सिविलाइजेशन एक स्टेज के आगे, एक स्टेज के बाद आगे मजीद प्रोग्रेस नहीं कर पा रही, फंस गई है इन इट साइड ऑफ इटसेल्फ। और फिर क्या होता है, कहता है फिर एक किस्म का उस कॉन्ट्रडिक्शन को जिस तरह सोक्रेटिक डायलॉग में हम हल करते हैं, टू थीसिस और एंटी थीसिस, वो थीसिस और एंटी थीसिस सोसाइटी और हिस्ट्री के अंदर हमें नजर आता है। सोसाइटी के अंदर एक दूसरे से क्लैश करते हैं, द येन एंड द यांग, और उसके नतीजे में एक नई सोसाइटी पैदा होती है। और फिर वो नई सोसाइटी डेवलप करती है और उसके अंदर दो मुख्तलिफ मुतजाद कुव्वतें होती हैं और वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करती हैं और उसमें से फिर एक नई सोसाइटी और पैदा होती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इस तरह हिस्ट्री प्रोसीड्स इन अ डायलेक्ट. It goes forward in a dialectical spiral, evolving from the simple to the more and more and more and more complex kind of society. Hence, to conclude, civilization, everything we have built, whether it's art, architecture, social structures, ideologies, is the externalization of the spirit. The spirit, of course, is the world spirit that animates, creates this world, is the world. And the world is trying to understand itself. And it can only understand itself by building itself into a state, and then the state figuring out whether we built a good state or a bad state, and then the state, the people changing the state into another state, and then into another state, and then to another state. So this evolution is nothing but the dialectical movement of the Geist, which is the world spirit which created this entire universe. Civilization is the Geist coming to know itself. Civilization is the process through which
when what we are building, the Geist is coming to know itself. We can say our humans are coming to know nature, or humans are coming to know themselves. But what are humans? They're part of nature. Nature is getting to know nature. And what is nature? Again, nature is logos. One second. So the essence of the mind, what does the mind want to do? What does this world spirit want to do? Where is it going? What's the direction? It is freedom. It wants freedom. And its development must consist in breaking away from the restrictions imposed on it, both by nature as well as by human institutions. It's an inner freedom and an outer freedom. That freedom doesn't come about just because you say freedom. No, it comes about through knowledge. Knowledge of the natural world gives you freedom over the natural world. How? जिस तरह आपको जब पता चलता है कि अर्थक्वेक्स क्यों होते हैं, तो आप अर्थक्वेक से अपने आप को बचा सकते हैं. जब आपको पता चलता है कि खाद कैसे लगाएंगे और गंदम कैसे लगाएंगे और कैसे कटाई करेंगे, तो आप भूख से फ्रीडम हासिल कर सकते हैं. आप फिर खाना बना सकते हैं. इसी तरह जब आप अपने आप को जानेंगे, तो आप अपनी इंटरनल लिमिटेशन से आपको फ्रीडम मिलेगा. लाइक फॉर एग्जांपल बीइंग अ स्लेव टू योर ओन एपेटाइट्स, बीइंग अ स्लेव टू योर ओन the demands of your own body, etc. Because you know yourself. The more you know nature, the more you know yourself, the more free you become, the closer you also come to God himself, which is the spirit that animates this world. But he says, now, final हो गई. Mic drop हो गया, हेगल कह रहा है. क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको बात बता दी है, this was the great riddle of philosophy. This is the end of philosophy. अब मैंने जो फलसफा आपको बता दिया है, this was the secret we had been searching for 2,500 years throughout the history of philosophy. और जिस stage of society में हम पहुंच गए after the French Revolution, ये भी देखो अब end of history हो गया. और आपको पता है जिस वक्त मैंने अपनी किताब खत्म की, हेगल कहता है, उसी वक्त Napoleon walked into Germany and into my city. तो ये तीन चीजें coincidence नहीं है. It is the end of history. Yes, the end of history has been reached, says Hegel, long before Francis Fukuyama says it. What is the end of history? He says at the end of history, from social to the individual and reconciled in the social individual. कि social थे पहले हम first stage of history में, जब state of nature में थे, फिर individual हो गए, हमने कहा बस अपने वो जो yoke of period था, yoke of suffering वगैरह वाला period था, yoke of necessity वाला पीरियड था. और अब थर्ड स्टेज ऑफ हिस्ट्री में हम जा रहे हैं, जहां पे सोशल इंडिविजुअल है, यानी कि हम अपनी इंडिविजुअलिटी को भी रिकॉग्नाइज करते हैं और ये भी रिकॉग्नाइज करते हैं कि हम एक सोशल इंडिविजुअल है, सोसाइटी के अंदर रहने वाले इंडिविजुअल है. सो इन दिस वे ह्यूमैनिटी विल बी एबल टू रेकंसाइल and is reconciling the individual and the social interest together. दूसरी बात, from the subject God to the object, the material world, and reconciled in the subject object. What does this mean? God, which is the subject, creates the material world, which is the object, and now the subject and object have combined together when humanity is able to see each other not as objects but as subjects. Now finally that period of history जिसमें हम एक दूसरे को objects बनाने की कोशिश कर रहे थे, slaves बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो खत्म होगा, and we recognize in each other, you are a subject, I am a subject. We recognize each other's subjectivity. We stop trying to use each other as means to an end and recognize in each other the subjectivity that exists. So subject-object is now once again reconciled. And finally, from the infinite God to the finite man, and from the reconciliation of the infinite and finite, the unity of man and God, when humanity is able to understand that the rational is real and the real is rational. All that exists is God. God is all that exists. Hence, religion, science, history, the world, nature, humanity, civilization, logic, metaphysics, all are combined in this phenomenal, mind-bending, grand narrative that Hegel constructs, which was a monumental achievement of philosophy. Doesn't mean that's correct, but nonetheless, it was a monumental achievement of philosophical depth in understanding of what was going on in the world today. That's it. Thank you.